नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर, टैरिफ को लेकर। जो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव था वो बदस्तूर जारी है। कहा जा रहा था कि रूस से तेल खरीदने पर 25% का जो टैरिफ लगाया गया, टोटल टैरिफ जो हो गया था भारत पर, वो 50% के आसपास हो गया था। जो तनावपूर्ण जो रिश्ते थे वो बदस्तूर जारी थे, लेकिन अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के प्रधानमंत्री जो हैं, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत विशेष हैं और जो मौजूदा जो तनाव है उसके बावजूद मैं और मेरे जो मोदी साहब हैं वो दोस्त रहेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, वो ग्रेट हैं, लेकिन वो फिलहाल जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध बेहद विशेष हैं, इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी कभार ऐसे पल आ भी जाते हैं। अब इसी पूरे मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो इकोनॉमिकल फ्रंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, आज बाजार बंद है, मंडे को इसकी शुरुआत होगी तो वहां क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। प्रवीण सर, ओवर टू यू। कैसे देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर को? बिल्कुल, देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेके, जो कि पिछले 2-3 महीने में बुरी तरह से नीचे आए थे, बुरी गिरावट का शिकार हुए। एक बार को लगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, जब हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और रूस को लगता है कि चीन के हाथों गंवा दिया है। और इससे फिर ये एक अंदाजा पैदा हो रहा था कि अब लगता एक इर्रिपेरेबल लॉस जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कि क्या वो इर्रिपेरेबल लॉस भारत और अमेरिका के संबंधों में हो चुका है, जहां पे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि अब दुनिया के दो धड़े एक तरह से बनते हुए दिख रहे हैं। एक अमेरिका की अगुवाई में और एक चीन की अगुवाई में दो धड़े हो रहे हैं। भारत और रूस उसमें चीन के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब जब कल एक बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति का आया, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में जो आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं और तारीफों के पुल कसते हुए नजर आए सर। बिल्कुल। और उसके बाद उससे भी बड़ी चीज ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब दिया, ट्वीट किया, और उसमें उनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया और ये कहा कि जो है वो पूरी तरह से जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उनके शब्दों का अनुमोदन करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, और ये मानते हैं कि नवीन सर, हम भारत उस ट्वीट को भी अपने स्क्रीन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो ट्वीट किया है कि डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये ट्वीट करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन जो एएनआई का जो ट्वीट था सर, इसमें वो कहा गया था कि एट द व्हाइट हाउस द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड द following significant statements on the India-US relationship। और जिस वीडियो को जो हम लोग कुछ देर के बाद चलाएंगे सर, तो उसमें एक बहुत बड़ा कमेंट पीएम के साथ आया हुआ है सर। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल ये बयान जो त्वरित एक तरह से हम कहेंगे कि बयान आया है राष्ट्रपति ट्रंप के पूरे स्टेटमेंट के बाद, उससे अब एक तरह से ये बात जाहिर हो रही है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंधों में एक बार फिर से वापसी हो सकती है क्या। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है उसमें संदेशों का, उसमें आपके इमेजेस का बहुत बड़ा योगदान होता है विशाल। जी, आप याद कीजिए कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच एक फौरी जंग हुई, उसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके या ट्रंप के साथ रिश्तों को लेके या दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है इसको लेके कोई भी खुले तौर पर बयान नहीं दिया। उनका जी, संसद में एक बयान जरूर आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें किसी दूसरे देश की भागीदारी नहीं थी, ना दुनिया के किसी बड़े मुल्क ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया, और ना भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मसले हैं उसमें किसी दूसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करता है। इस बात को डॉक्टर एस जयशंकर
अलग अलग मंचों से दुनिया भर में कह चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला बयान है जो सीधा संदेश उन्होंने एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है। अब आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर आगे क्या होने वाला। बीच में कल जो एक बयान आया था, जो एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर सिंह, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो पीटर नवारो के बयानों को मिसलीडिंग बताया गया, और फिर ये कहा गया कि ये बयान गलत हैं, इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है, एक तरह से निंदा की गई। उसके बाद ये कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में बात चल रही है, दोनों दोनों देश एक दूसरे के लिए बेहद अहमियत रखते हैं और संबंधों का उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सीधा बयान आया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में सीधी कोई फोन कॉल पे बातचीत हो जाए, एक बात। दूसरी बात, अगले कुछ दिनों में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग शुरू होने वाली है। वहां पे अभी तक जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जाने का वहां कोई प्रोग्राम नहीं है, और डॉक्टर एस जयशंकर भारत की तरफ से उसमें शिरकत करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश था कि भारत, जी क्योंकि सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इस यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है उसमें हर सालाना एक वो है जलसा है, उसमें सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शिरकत करते हैं और अपनी स्पीच देते हैं, और वो उस स्पीच को पूरी दुनिया सुनती है। और अब ऐसे मोर्चे पर, जबकि टैरिफ का चक्कर है दुनिया भर में, अलग अलग तरह का एक रीअलाइनमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे मोर्चे पर यह खबर आना कि प्रधानमंत्री मोदी शायद अमेरिका नहीं जाएंगे इस यूएनजीए की मीटिंग में शिरकत करने, उससे फिर चीजों का थोड़ा सा एक ऐसा अंदेशा लग रहा था कि आखिर आगे अब क्या होगा, क्योंकि ये एक स्थिति थोड़ी गंभीर थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री का बयान आया है तो वहां से ये रास्ता भी क्या खुलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूएनजीए में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं, और उसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से रिवाइव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगली कड़ी में इसमें यह हो सकता है कि फिर जो नवंबर तक एक टैरिफ डील की बात, ट्रेड डील की बात एक कही जा रही है, शायद उस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ते हुए विशाल दिखाई दें। जी जी जी। सर, आपने जो ट्रंप के सलाहकार साहब का जो बयान था उसको भी आपने डिकोड करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कहा था कि रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है और पूरी जो कीमत है वो पूरा देश चुका रहा है। भारत के चीन रूस के करीब जाने पर भी उनकी तरफ से एक बयान आया था, कहा गया था कि देखिए इससे जो दुनिया में अशांति फैलती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से एससीओ समिट में जिन ट्रायो, मैं तो ट्रायो शब्द का इस्तेमाल करता हूँ सर, कि मोदी साहब, पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब, इन तीनों तस्वीरें सामने आई। उसके बाद ट्रंप साहब का एक लेख भी आया था सर, वो कह रहे थे कि दुनिया को लग रहा होगा कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं चुपके चुपके सभी गतिविधियों पर नज़र डाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बारीकी से सब चीज़ों को देख रहा हूँ। फिर कल उन्होंने बड़ा अच्छा एक रोचक स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है, और बहुत बड़ा कमेंट आया था। उसके बाद भी हम लोगों ने इस चर्चा को, लेकिन सर अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसका इकोनॉमिकल एंगल क्या होगा। जिस तरह से हम लोगों ने मनी सेंटर पे भी बहुत चीज़ों को चर्चा की, कहा कि देखिए ट्रंप के इस कदम से, यानी टैरिफ जो लगाया गया, उसके बाद भारतीय सरकार जो है वो थोड़ा एक्टिव होती हुई नजर आई। उन्होंने इनवर्ड पॉलिसी लुक को बदला। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अब जो एक्सपोर्ट को लेकर जो लॉस हो रहा है उसको कैसे हम लोग भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया, जिससे कहा गया कि अब जो है कंजम्पशन में बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को रिवाइव करने में कोशिश की जाएगी। अगर जो लॉस हो रहा है बाहर सामान को देने पर, अगर भारतीय लैंड में ही अगर उन चीज़ों को खरीदा जा सके, बेचा जा सके, तो वो भरपाई की जा सकती है। तो सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपसे समझना चाहेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आप ऐसे समझिए कि ये इकोनॉमी के लिए एक डबल बूस्टर के जैसा होगा। आप सीधे तौर पर इस बात को मान लीजिए कि अगर रिश्ते सुधर रहे हैं तो भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के की इकोनॉमीज के लिए एक अच्छी चीज है, पहली बात।
क्योंकि इस तरह की चीजें आ रही थी कि कम से कम 60 बिलियन डॉलर का, 60 अरब डॉलर का भारत का एक्सपोर्ट फंसने की कगार पे है। उसके बाद कल एक खबर आई जिसका खंडन किया गया, जी कैटेगोरिकली डिनाई किया गया कि ये कहां से खबर आई, कुछ पता नहीं है, और पूरा सोशल मीडिया उस खबर से अटा पड़ा हुआ है कि अमेरिका अब भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं उन पर सैंक्शंस लगा सकता है। कैसे सैंक्शंस लगा सकता है कि वो अमेरिकन कंपनियों को ये बोल सकते हैं कि भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट न दिए जाएं, जितने भी आईटी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भारतीय कंपनियों को आउटसोर्स न किए जाएं। तो ये हालांकि एक जी एक्सट्रीम स्टेप होता है और इसको पूरी शुरुआती तौर पर ही पूरी खारिज किया गया, जिस न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर आई वहां पे भी खारिज किया गया। लेकिन खतरे इस तरह के बड़े बड़े मौजूद थे। एक बात, जी अब जी जो मैं बात कह रहा हूं कि डबल बूस्टर कैसे साबित हो सकता है। देखिए, एक तो सरकार ने ये कहिए कि देश की जो लोगों की किस्मत अच्छी है कि जिन कदमों को सरकार उठाने से हिचक रही थी पिछले कई वर्षों से, जिसकी डिमांड की जा रही थी पिछले कई वर्षों से कि साहब राहत दीजिए, महंगाई से, जीएसटी से, मल्टी लेयर्ड टैक्सेशन से राहत दीजिए, और वहां सरकार हाथ पैर पीछे खींच रही थी कि नहीं साहब ये राहत कैसे दे सकते हैं, इंश्योरेंस पे राहत कैसे दी जा सकती है, बड़ा लॉस हो जाएगा। उसको सरकार को आनन फानन में लाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त को ऐलान करना पड़ा कि जीएसटी पे हम सबसे बड़ा रिफॉर्म करने जा रहे हैं। इस जी रिफॉर्म की जड़ में अगर बहुत सारे फैक्टर दूसरे थे, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरह नोज डाइव हुए हैं, जिस तरह से गिरे हैं, उसमें देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए कंजम्पशन के इसका सहारा सरकार लेना चाहती थी। जी यानी कहा जा रहा था कंजम्पशन सर कि जीडीपी में 0.5 से लेकर 0.7% के आसपास की गिरावट भी आ सकती है। बिल्कुल। तो जीडीपी की गिरावट का था, 1.5-2 लाख नौकरियों का खतरा था, जो तिरपुर से लेकर नोएडा तक की या सूरत की जो कंपनियां थी, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो या टेक्सटाइल हो या फुटवेयर हो, तो तमाम तरह की कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गई थी, खासतौर पर अगर मैं एमएसएमई की बात करूं। अब क्या होगा, अब सरकार ने तो जीएसटी की राहत दे दी, कंपनियों ने भी ऐलान कर दिया कि साहब जो राहत मिली है हम उसको एज इट इज जो है वो पास आपकी ऑन कई करेंगे कस्टमर को। ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है सर। जिस तरह से हम बिल्कुल। लोग बहुत बहुत मनी सेंट्रल में हम लोग इस बात की चर्चा करते थे कि आरबीआई अगर रेट कट करता है तो बहुत पछड़ा पड़ता था। कहा जाता था कि जो बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उसको ट्रांसमिट करने में बड़ी आनाकानी करते हैं, और उसको लेकर आरबीआई बहुत तरीके से दबाव भी डालता था कि भाई देखिए हमारा जो कर्तव्य है वो हमने पूरा कर दिया, अब आप प्राइवेट बैंकर्स को चाहिए, या तमाम बैंकों को लेकर उन्होंने कहा था कि उस चीज को आप पास ऑन कीजिए ताकि नीचे तबके में लोगों को राहत मिल सके। लेकिन यहाँ देखिए जिस तरह से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ, तुरंत ऑटोमोबाइल कंपनियों को देखिए तरफ से उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रेस रिलीज आने लगे। उन्होंने बकायदा बहुत अच्छा डेटा भी निकाल कर बता दिया सर कि प्री जीएसटी क्या रेट थे और अब पोस्ट जीएसटी जो है, यानी जो 22 सितंबर से जो राहत मिलने वाली है, अब क्या होने वाला है, उसको लेकर बहुत अच्छा एक प्रेस रिलीज भी जारी करते हुए दिख रही है ऑटोमोबाइल कंपनी। नहीं, बिल्कुल, न सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां, क्योंकि कार कंपनियों पर आफत भी ज्यादा थी। आप ये मानकर चलिए कि सरकार साफ तौर पर ये कह रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो अलग अलग इंटरव्यूज दिए हैं कल से आज तक, उनमें साफ तौर पे ये कहा है कि अब हम 22 तारीख से इस चीज को मॉनिटर करेंगे कि कौन सी कंपनी कितना जीएसटी का फायदा कस्टमर्स को दे रही है। तो सरकार की पैनी नजर है। सरकार का दूसरा प्रयास ये है कि अगर कंपनियां नहीं देती फायदा, तो वो जितने भी एसोसिएशन हैं, जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, जितने संगठन है इंडस्ट्री के, वहां जाकर इस बात को कहेगी कि आप हमने इतना बड़ा फायदा दिया है, अब आप इसको पास ऑन करवाएं। तो सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। तो जीएसटी का फायदा मिलने का मतलब है लोगों की जेब को फायदा होना, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है अब वो बचेगी, और इस तरह के भी खबरें आ रही हैं कि महंगाई में भी गिरावट आएगी। जी खैर, अब एक सर जो तरफ जी प्लीज प्लीज। बिल्कुल, मैं बस एक और वाक्य कहूंगा। अब एक तो जीएसटी की राहत है, उसके बाद अगर आपको ट्रेड डील पे कोई बात बन जाती है, एडिशनल टैरिफ हट जाती है, भारत के जो एक्सपोर्ट अमेरिका को हैं वो अगर फिर से बहाल हो जाते हैं, तो आप समझिए कि ये एक डबल थ्रस्ट होगा इकोनॉमी को, जो कि पहली तिमाही में पहले ही 7.8% की रफ्तार से बढ़ चुकी है, और माना यह जा रहा है कि दूसरी तिमाही में भी 7% की ग्रोथ इकोनॉमी हासिल कर लेगी। तो ये डबल बोनांजा होगा इकोनॉमी के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी विशाल।
जी। आप सर जो ट्रम्प साहब के जो बयान हैं उनको हम लोग डिकोड आम करने की आदमी को आम आदमी को विंडफॉल गेन हो गया इस ट्रम्प मोदी की जो एक रस्साकसी शुरू हुई, या भारत और अमेरिका की एक रस्साकसी शुरू हुई, उसमें आम लोगों को एक बड़ी राहत, एक ब्लेसिंग्स के तौर पे मिली है विशाल। जी। सर अब मोदी और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ट्रम्प साहब, लेकिन कल उनके जो बयान है उनको और हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सर ट्रम्प ने ये भी कहा कि वो बेहद निराश हैं कि भारत रूस से बहुत तेल खरीद रहा है। हमने भारत पर बहुत टैरिफ लगाया है, लगभग 50% का वो उदाहरण दे भी रहे हैं कि देखिए 50% का टैरिफ सबसे ज्यादा उन्हीं पर लग रहा है। फिर मोदी से मेरे जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, वो महान हैं। वो यहाँ कुछ महीने पहले आए भी थे। ये पूछने पर भी उनसे एक सवाल भी पूछा गया कि सर भारत और अन्य देशों के साथ आपकी जो ट्रेड को लेकर जो है वार्ता जो है वो कैसी चल रही है, इस पर ट्रम्प ने कहा कि ये बढ़िया चल रही है। लेकिन उन्होंने फिर ये भी बातें कही कि हम यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा निराश हैं। तो सर इन स्टेटमेंट्स को भी कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए इस पूरी जो स्टैंड है इस पे अमेरिका या कहें कि राष्ट्रपति ट्रम्प पिछले कुछ वक्त से अड़े हुए थे। अब उसके दो फैक्टर है, एक तो उसका जेन्युइन रीजन हो सकता है कि साहब किसी तरह से देखिए जो कोशिश ट्रम्प करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन की जंग रुके, और वो जंग रुके और उसका क्रेडिट उनको मिले, और उसका कंसिक्वेंस ये हो कि उसके बदले उनको नोबल मिले। तो जी। रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के पीछे ट्रम्प का मकसद, उनका जो अल्टीमेट गोल एक है कि किसी तरह से मुझे नोबल अवार्ड मिले और मैं दुनिया में जो है वो ऐतिहासिक राष्ट्रपति के तौर पे मशहूर हो जाऊं। तो खैर उनका एक तो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि रशियन ऑयल की भारत की जो डील्स हैं उसको रोका जाए, ताकि भारत निगोशिएशन की टेबल पर आकर बैठे। जो जी। अमेरिका चाहता है इस डील से, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से, कि साहब आप अपना फार्म सेक्टर खोल दें, आप अपना डेयरी सेक्टर खोल दें, और तीसरी और बहुत बड़ी चीज कि आप अपना डिफेंस सेक्टर खोल दें अमेरिकन कंपनियों के लिए, चाहे एयरक्राफ्ट हो या दूसरे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हो, उनको भारत रूस की जगह अमेरिका से खरीदे। तो अल्टीमेटली अमेरिकी खजाने को भरने, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम दूसरा सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है दुनिया का अभी भी। जी। तो ऐसी स्थिति में भारत जब इतना मैसिव लेवल पे जब आप हथियारों का आयात करते हैं, तो अमेरिकन राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि अमेरिकी खजाने को भरने में भारत का योगदान हो। तो एक उनका मसला ये है, जहां पे वो F-35B जो फाइटर जेट्स हैं, जिसकी डील के लिए वो पीएम मोदी के पीछे पड़े थे, भारत के पीछे पड़े थे कि किसी भी तरह से आप इस डील को कीजिए, हमारे एयरक्राफ्ट को आप खरीदिए। भारत वो खरीदना नहीं चाहता, या कुछ वक्त के लिए राजी हुआ, लेकिन उसको लगता है भारत को कि साहब इससे अच्छे राफाल जो हैं वो हैं। तो कुल मिला के दो प्रेशर टैक्टिक्स थी रशियन ऑयल से भारत को रोकने के लिए। अब उसका चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे एस जयशंकर हो या दूसरे भारत की तरफ से जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ये कहना हो कि जितना हम तेल खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा गैस जो है यूरोप खरीद रहा है, उससे ज़्यादा गैस ऑयल चीन खरीद रहा है, वहां आपने नहीं लगाई। तो कुल मिला के सिचुएशन इस तरह थी कि चीजें समअप हो नहीं पा रही वहां पे। अब इन सब के बाद क्या चीजें नॉर्मलाइज होंगी, क्या दोनों राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे? क्योंकि एक मसला ये भी हुआ था कि जब मोदी जो है वो कनाडा थे G20 समिट के लिए, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा था कि आप अमेरिका होते हुए जाइए, वहां पे उनके साथ मीटिंग करते हुए तब जाएं। चूंकि उसी वक्त पे राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के जो COA मुनीर उनको होस्ट कर रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए, और जी। इस बात की भी एक खुन्नस ट्रंप के मन में थी। तो कुल मिला के हालात अब इस तरह के हैं, लेकिन अब हो सकता है कि चीजें एक बार फिर से सुधरती हुई दिखाई दे विशाल। अब सर मैं जितने भी जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहिए या आईआर के एक्सपर्ट्स कहिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, उनको मैं जब पढ़ रहा था सुन रहा था तो वो कहते हुए नजर आया कि देखिए ट्रंप ने भारत के चीन के पाले में जाने वाली जो बात कही सर, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका को नुकसान हुआ। वो इस तरह से भी हुआ है कि अमेरिका की जो छवि है वो खराब होती हुई नजर आई है। क्या सर आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, देखिए अमेरिका की छवि दुनिया भर की नजरों में खराब हुई और नहीं हुई हो उससे ज्यादा वास्ता नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात को लेके ज्यादा है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट एक क्रिएट हुआ है,
क्या ये परमानेंट चलने वाला है या ये शॉर्ट लिव्ड होगा, या कुछ वक्त बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ वैसे ही घुल मिल जाएंगे जैसा पिछले 25 साल की डिप्लोमेसी के बाद एक पड़ाव या एक मकाम दोनों देशों ने हासिल किया था एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे। और जी इस बात को तमाम जो एनालिस्ट हैं, जो जानकार हैं, वो ये बात बार बार कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप आज पहुंचे इतनी ऊंचाई पे, उसमें पिछले 25 सालों की एक बहुत वेल क्राफ्टेड डिप्लोमेसी का योगदान रहा। चाहे क्लिंटन हो, चाहे राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हो वाजपेयी जी के समय पे, उन सबको लेकर आते हुए, चाहे बराक ओबामा रहे हो, फिर बाइडेन रहे हो, उन सबको लेकर आकर एक इस मुकाम पर भारत और अमेरिका पहुंचे थे, जहां दोनों देश एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे थे। एक बात, दूसरी बात, अमेरिका भारत को साउथ एशिया में चीन के एक काउंटर पार्ट के तौर पर देख रहा था कि साहब, चीन को अगर कंट्रोल करना है तो भारत को का सपोर्ट करना होगा। लेकिन वो पूरे के पूरा 25 साल की मेहनत एक झटके में राष्ट्रपति ट्रंप ने धो दी, खत्म कर दिया उसको। अब हम एक बार बैक टू बेसिक्स पे आ गए हैं, या बैक टू जीरो पे आ गए हैं। यहां से एक बार फिर से संबंधों की शुरुआत होगी, लेकिन क्या भारत पक्के तौर पे अमेरिका का भरोसा कर पाएगा जब बेहद अहम रणनीतिक मसले उसके सामने आएंगे? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप उतनी ही मुस्तैदी से पाकिस्तान के भी साथ लगे हों, भले उनका जो क्रिप्टो का की डीलिंग्स हो पाकिस्तान के साथ या दूसरी चीजें हो, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से और तवज्जो दी है, आसिम मुनीर को भी कल भी हम लोग न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे सर। उनको भी कहा गया कि आपको यूएस के सिटीजनशिप को प्रदान कर दिया गया बहुत जल्दी। नहीं, आसिम मुनीर को नहीं, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को अच्छा जून में उन्होंने अप्लाई किया था, और 22 अगस्त को उनकी पत्नी और 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जी ये भी चीजें भारत को असहज बनाती हैं। अगर आप पाकिस्तान के क्लोज होंगे तो भारत के क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बिल्कुल असहज रिश्ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जी जी अब प्रवीण सर आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत और अमेरिका ने जो जब ऐसी बातें चल नहीं रही थी ट्रम्प टैरिफ को लेकर, जो विवाद जो नहीं चला, तो उसके पहले कहा गया था कि भारत और अमेरिका का जो लक्ष्य है कि 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को जो मौजूदा है जो है 191 अरब डॉलर के आसपास है, उससे उसको बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात कही जा रही थी सर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसता हुआ दिख रहा था, उस समय भी हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सामान है उनको लेकर, और तमाम नॉन वेजिटेबल गुड्स के, नॉन वेजिटेबल जो मिल्क प्रोडक्ट्स थे उनको लेकर जो समस्याएं थी, और तमाम फैक्टर्स थे सर, उन पर क्या सहमति अब बनती हुई नजर आएगी, या क्या होगा द बिगर पिक्चर? देखिए, मसला अभी 2 चीजों पे जो आप बता रहे हैं, उन्हीं 2 चीजों पे सबसे ज्यादा मसला फंसा हुआ है। एक हो गया आपका फार्म प्रोडक्ट्स, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी शामिल है, मक्का शामिल है, जीएम मक्का शामिल है, और दूसरा आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें दूध हो गया। उसमें ये भी नहीं पता, जिस जिस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न आया कि साहब जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कितने वेगन है, क्या क्या हैं, उनको लेके भी आशंकाएं हैं। अब यहाँ दोनों देश किस तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देश में कम से कम अलग रैलियों में और अलग अपनी स्पीचेस में इस बात को साफ तौर पे कह चुके हैं कि चाहे मुझे भारत और मतलब जिस तरह की चीजें चल रही उसमें मुझे पर्सनल खामियाजा बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं देश के नागरिकों का या किसानों का अहित नहीं होने दूंगा, और इसका मुझे एक निजी तौर पे खामियाजा उठाना पड़ेगा। वो ये बात कह चुके हैं अपनी स्पीचेस में, और वो ये भी आश्वासन दे चुके हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी चीजें बने या बिगड़े, वो किसानों के हितों को राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने वाले नहीं हैं। और जी पूरी विपक्ष की भी नजर इस बात पे है कि क्या भारत अमेरिका को कुछ खास रियायतें फार्म सेक्टर में देता है कि नहीं, क्योंकि देखिए, सरकार को भी ये पता है कि पिछली बार उन्होंने जो सबसे बड़ा फार्म सेक्टर रिफॉर्म करने की कोशिश की, वो बुरी तरह से बैकफायर हुआ। जी उसके बाद जी से सरकार को समझाने में लंबा वक्त लग गया। आप समझिए कि 2.5-3 साल से सरकार लगी हुई है कि किसी तरह बहुत से किरकिरी भी हुई थी किसानों सर को मोदी समझाए। सरकार की। बिल्कुल किरकिरी हुई, किसान धरने पे बैठ गए, 2-2.5 साल लंबा आंदोलन चला, सड़कें ब्लॉक हुई। तो सरकार के एक सामने मुझे एक याद है बुरा सर, एक सबक लैंड है। एक्विजिशन बिल को लेकर था, और एक दूसरा था जो फार्म को लेकर था, एग्रीकल्चर को लेकर बिल्कुल, था। बिल्कुल। 3 फार्म किसानों लॉस। को 3 कानून थे जो है उसको लेके एक बड़ा जो बवाल देश भर में देखा गया।
तो अगर सरकार रत्ती भर भी आगे पीछे होती है तो आप समझिए कि इस देश में फिर से कोई बड़ी बात नहीं है कि किसानों का आंदोलन फिर से शुरू हो जाए और सरकार के लिए चीजों को हैंडल करना फिर से मुसीबत भरा हो जाए। तो जी सरकार इस मामले पे कोई आप समझिए कि बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहती है चालू। जी। प्रवीण सर, चूंकि आपको जनता सुन रही है और भारी तादाद में लोग जो हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं सर, तो उनको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। विजित ब्रह्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है सर कि प्रवीण जी, आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान भी तो सर क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया कि भारत और चीन और जो रशिया है, ये तीनों का जो ट्रायो है ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो इनका सवाल है कि सर, चाइना और पाकिस्तान में तो क्लोज हैं। नहीं, चाइना पाकिस्तान क्लोज है नहीं, चाइना पाकिस्तान क्लोज थे और क्लोज हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, अभी जी ऐसा पहली बार हो रहा है, शायद दर्शकों को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और जो चुपचाप हुआ है। पाकिस्तान में एक रेल लाइन को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट था एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट जो चाइना का पूरा फंडेड है। चाइना उस पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कॉरिडोर। एग्जैक्टली उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी वो रेल लाइन। उस रेल लाइन की फंडिंग्स को करने से चीन ने मना कर दिया बिल्कुल रिसेंटली। और अब पाकिस्तान एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस रेल लाइन की फंडिंग के लिए गुहार लगा रहा है। तो हाल के वक्त में ये एक बड़ा अपडेट है। भले पाकिस्तान और चीन साथ हैं और चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो एससीओ की मीटिंग में साथ साथ भी देखे गए। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को नेचुरल पार्टनर बताते हैं, सदाबहार पार्टनर बताते हैं। देखिए, भारत और चीन के रिश्ते बहुत संजीदा रहे हैं बहुत, और 2020 के बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी बुरे दौर जी से भी गुजरे। और पाकिस्तान को चीन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चीन भारत को एक तरह से लगाम लगाने में, क्योंकि वो दो फ्रंट की वॉर की जो बात कही जाती है उसमें एक फ्रंट आपका नॉर्दर्न फ्रंट हो जाता है या वेस्टर्न फ्रंट हो जाता है जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, दूसरा एक नॉर्दर्न फ्रंट हो जाता है पूरा वहां से लेके आपका अरुणाचल तक, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, जो कि चाइना के उसमें है। तो चीन अल्टीमेटली तो भारत को कंट्रोल ही करना चाहता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत इस दक्षिण एशिया में एक बड़ी जी सुपर पावर के तौर पे काम करे। जी। प्रवीण सर, अब कुलदीप राठौर जी का सवाल है आपसे कि आईटी पर क्या असर पड़ेगा सर। तो चूंकि मेरे पास भी कुछ डेटा है सर, लगातार हम लोग भी हमारे कंसल्टिंग एडिटर जो हैं मनी नाइन के, उनके साथ भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। आईटी, भारतीय आईटी सेक्टर पर हम लोग जो बात कर रहे थे सर, कल भी जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि कल ऐसी खबरें आने लगी कि आफ्टर फार्मास्यूटिकल्स, जब कहा गया कि 200% का टैरिफ लगाया जाएगा फार्मा प्रोडक्ट्स के बाद, उसके बाद भारत को और परेशान करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा खबर आ रहा था सर कि अब आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो उस पर हम लोगों ने कहानी की है, जिसको हम लोग वीकेंड पे लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, अब भारतीय आईटी सेक्टर पर अगर टैरिफ लगता है तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है सर कि आईटी सेक्टर का अगर कुल सालाना रेवेन्यू की मैं बात करूं सर, तो वो करीबन $254 बिलियन के आसपास है। भारतीय आईटी कंपनियों की 50 से 60% जो इनकम है वो अमेरिका से आती है। भारतीय आईटी सेक्टर में करीब 50 लाख से ऊपर, मैं अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 54 लाख लोग जो हैं अब वो नौकरी करते हैं। अब कहा जा रहा है प्रवीण सर कि अगर आईटी सेक्टर की अगर मार पड़ती है तो कहाँ कहाँ असर होगा। तो कहा जा रहा है कि रियलिटी सेक्टर में असर पड़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है, ऑटो सेक्टर पर कहा जा रहा है, सीमेंट मेटल सेक्टर और ब्रांडेड रिटेल जो एफएमसीजी सेक्टर है यहाँ पर भी मार पड़ती हुई नजर आएगी। तो प्रवीण सर, आपसे भी इसका अपग्रेडेड वर्जन जानना चाहेंगे कि आईटी पर लगने वाला है क्या टैरिफ। नहीं, देखिए, ये बेहद एक्सट्रीम और तकरीबन इम्पॉसिबल स्टेप है कि भारत के आईटी सेक्टर पर किसी तरह के टैरिफ लगाए जाएं। दो उसके वजह हैं। पहली वजह यह है कि आईटी जो भारत की जो कंपनियां हैं वो दरअसल आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती हैं, वो सर्विसेज सेक्टर में है, वो गुड्स तो बनाती नहीं है। टैरिफ का पूरा मसला फिलहाल गुड्स तक सीमित है, लेकिन ओके। इसमें 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 कैच इस बात का है कि चूंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी एबनॉर्मल डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं, असाधारण फैसला, कोई भी फैसला वो ले सकते हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो कुछ भी डिसीजन ले लें। अब इस हालात में लग सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि आईटी पे टैरिफ लगना तकरीबन नामुमकिन है। ये एक एक्सट्रीम स्टेप है जिसको अमेरिका नहीं लेगा।
चीन के साथ इतने, देखिए भारत के साथ संबंध उतने खराब नहीं जितने चीन के साथ खराब है। क्या चीन को पे किसी तरह के इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए? एक एक कहीं मैं सुन रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है अमेरिका अगर चाहे तो एक झटके में भारत के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, जी। और वो इस तरह की गूगल या जीमेल पे भारत में सर्विसेज को रोक रोक के। तो इस तरह की चीजें असल में बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हैं। फिलहाल जो रियलिटी है, रियल पॉलिटिकल जिस पॉलिटिक की जिसको बात करते हैं, उसमें इस तरह की चीजें बहुत हाइपोथेटिकल हैं। ये कल्पना से परे है कि अभी किसी तरह का आईटी पे टैरिफ या उसमें प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका करे। तो बहुत जी। मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? मान लीजिए जो आपने सवाल पूछा, देखिए जी। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि भारत की इकोनॉमी पे इसके रिपल इफेक्ट दिखाई देंगे बहुत ज्यादा। बैंकिंग सिस्टम से लेके और आपके रियल्टी और जो तमाम सेक्टर हैं, कंजम्पशन, सारी सारी जगह पे बड़े भारी एक क्राइसिस पैदा हो सकती है। ईएमआईज बाउंस होंगी, डिफॉल्ट होंगे, और वो खैर वो जो सर ईएमआईज चिंता। ईएमआईज बाउंस होंगे, उसको लेकर आप जैसे ही आपने कमेंट किया, मुझे तुरंत सौरभ मुखर्जी साहब की बात याद आ गई। वो कहते हुए भी नजर आ रहे थे सर कि जिस तरह से आईटी सेक्टर के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो कहा जा रहा था कि कोविड के टाइम पर जो पर्सनल लोन, होम लोन लिया गया, उसकी जो पहली ईएमआई है वो बाउंस होती हुई नजर आ रही है। लोग जो है पहला जो चेक जो डाल रहे हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो लोन लिया जा रहा है उसकी पहली ईएमआई नहीं चुकाई जा रही है, कर्ज जो है चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर कहा गया कि ये समस्याएं अगर कहा जाए, समझा जाए कि अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सौरभ मुखर्जी साहब जो मास्टर्स इन्वेस्टमेंट के हैं, और उन्होंने कहा कि ये समस्या जो है आईटी हब्स में देखने को मिल रही है, यानी बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, मतलब जो मेट्रो सिटीज है वहाँ समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। सर अगर वहाँ अगर स्थिति, मैं आपको आंकड़े भी बता रहा था, 54 लाख से आसपास जो है लोग अधिकारी हैं, काम करते हैं। अगर लोगों को हाई पेड मिलता है सर, हाई पेड लोगों की सैलरी होती है, तो इनकी जो हाई पेड सैलरी होती है तो अच्छा खासा लोन भी उठाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका घर होता है। अगर वहाँ कॉल आने लगा सर, तो समझिए कि इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सर। नहीं, इस वक्त देखिए सबसे बड़ी समस्या जो आईटी सेक्टर फेस कर रहा है वो है एआई की समस्या। हम्म, एआई की वजह से चाहे टीसीएस में 12,000 नौकरियों के जाने की बात हो, या चुपचाप ले ऑफ आईटी कंपनियों जो में जो छटनी हो हो रही रही है है, सर। बिल्कुल जो चुपचाप छटनी हो रही है उसका पता नहीं चल रहा। आपको 12,000 छटनियां हुई, वो दिखा, वो एक बड़ी न्यूज के तौर पे सामने आया। लेकिन क्या अंदर खाने 100 आदमी, 50 आदमी, 25 आदमी, इस तरह से लेबर फोर्स को कम किया जा रहा है, या जिसको आईटी कंपनियां कहती हैं कि हम ऑगमेंट कर रहे हैं या ऑप्टिमाइजेशन पे हैं, या हम उसको रीअलाइन कर रहे हैं अपने पूरे वर्कफोर्स को। वो जी। एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, बहुत बड़ी चिंता ऑलरेडी आईटी सेक्टर में चल रही है। आईटी सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो इस चीज से जूझ रहे हैं। और ये क्राइसिस वही, अगर अगर आप कंबाइन होती है किसी तरह के टैरिफ हाइक के साथ या टैरिफ नए इंपोज होने के साथ अगर आईटी सेक्टर पे, तो वो एक फुल ब्लोन क्राइसिस होगी। उसका वो पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, खतरा साबित होगी विचार। जी। सर अब कुछ ट्रम्प साहब के जो बयान हैं उनको भी डिकोड कर लेते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत पर उन्होंने इसलिए 50% टैरिफ लगाया क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता चला, वन साइडेड वाली बात कहते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि देखिए अमेरिकी कंपनी जो है हार्ले डेविडसन जो है भारत में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही है क्योंकि भारत ने 200% का टैरिफ लगाया हुआ है। इस वजह से कंपनी ने भारत में ही एक प्लांट बनाया जिससे अब उसे टैरिफ नहीं देना पड़ता है। तो इन सब तमाम तरह की जो बातें आना सर, ये रिश्तों को और बिगाड़ते चली गई सर। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि पीटर नवारो की भी आपने बात कही, उन्होंने भारतीय ब्राह्मण्स को लेकर कहा गया, फिर उसके बाद उस पर भी लेकर बहुत रार हुआ। कहा गया कि ये ब्राह्मण्स का मतलब ये नहीं है कि सर्वोच्च जाति को लेकर, ये जाति विशेष नहीं था, इनका मतलब था कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया में जो है अमीरों के लिए संबोधित किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि ये जो बयान है ये भ्रामक है, अज्ञानता उनकी दिखाती है। संजीव सान्याल साहब जो हैं प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद यानी जो ईएसी के सदस्य हैं, उन्होंने भी नवारो की टिप्पणी को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये बयान बताता है कि अमेरिका के बौद्धिक क्षेत्रों में भारत के प्रति किस तरह के पूर्वाग्रह यानी जो प्रिजुडिस है वो हावी है। ये सोच जो है सीधे तौर पर 19वीं सदी के जेम्स मिल जैसे औपनिवेशिक लेखों की विरासत है। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे संजीव सान्याल साहब भी। इसके अलावा प्रवीण सर, नवारो ने यूक्रेन जंग को कहा कि ये मोदी वॉर है।
इसको लेकर भी जो है बहुत जो है रसाकसी हुई थी। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं। अब जो जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो राष्ट्रपति ट्रंप के, वो असल में चीज़ों को समझने में थोड़ा-सा उनसे गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इंडिया इज़ फंडिंग रशियाज़ वॉर मशीन्स। तो भारत जो है वो रशिया को फंड कर रहा है और उस भारत की फंडिंग से दरअसल रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। खैर उनकी बातों का क्या कहा जाए, लेकिन मैं बताऊं, ज़्यादा बड़ा पॉइंट इस वक्त जो बिगर पॉइंट है विशाल, वो ये है कि किन चीज़ों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन एक दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाया। जी। ये एक ये इस सवाल का हमको दरअसल एनालिसिस करना चाहिए। ये सबसे जी। बड़ा सवाल है इस वक्त का कि हम्म। ऑल ऑफ सडन जहां 50% का टैरिफ लगाया, अभी अगस्त में वो 27 अगस्त से एग्जीक्यूट हो गए, लागू हो गए। उसके बाद आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या बनी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनको प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में शब्द लिखने पड़े या बोलने पड़े अपनी जो सर इसके प्रेस। पीछे माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, क्या इसके पीछे जो हमारे घरेलू स्तर पर जो अच्छे नंबर्स आए, ये भी एक बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि नहीं मानते? कि देखिए जैसे ही इन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत अच्छे नंबर्स पुश किए। चाहे आप जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आप देख लीजिए, 1.86 लाख करोड़ के आसपास हो, या उसके बाद जो जीडीपी के जो नंबर्स आए जो 7.8% के आसपास हो, महंगाई दर के आंकड़े को देखिए 1.55 के आसपास, और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाला जो कदम उठाया गया है उसके बाद महंगाई दर तो और समझिए कि 1% से भी नीचे आ जाएगी सर। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है जिसको लीड करते हुए दिखते हैं सौम्यकांति घोष साहब। नहीं, बिल्कुल, दो दो इन दो चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बल्कि 3 मैं कहूँगा कि बड़े फैक्टर रहे हैं। पहला फैक्टर सबसे बड़ा रहा है भारत की खामोशी। देखिए, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, उनके ट्रेड सलाहकार हों या आपके कॉमर्स सेक्रेटरी हों, उनकी तरफ से अलग-अलग वक़्त पे लंबे-चौड़े बयान आते रहे। चाहे ट्रेज़री सेक्रेटरी हों, चाहे कॉमर्स सेक्रेटरी हों, चाहे ट्रेड एडवाइज़र हों और खुद राष्ट्रपति ट्रंप हों। उनकी तरफ से बार-बार एक धमकी भरी टोन लगातार भारत के लिए दिखाई दी। इन्होंने मतलब अभी एक बयान आया था स्कॉट बेसेंट का, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, रुपए और टूट जाए, या उस तरह का उन्होंने बयान दिया। एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगेंगे राष्ट्रपति ट्रंप से, और राष्ट्रपति ट्रंप देखेंगे कि भारत के साथ या मोदी के साथ डील किस तरह से करना है। तो जो हाइपरबोल या जिस तरह के असंतुलित बयान अमेरिका की तरफ से आए, उस इन सब उकसावे के बयानों के बावजूद भारतीय पक्ष से, चाहे विदेश मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, या कोई दूसरे कॉमर्स मिनिस्टर हों, पीयूष गोयल, या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों, किसी की तरफ से भी एक तो उकसावे भरा कोई बयान नहीं आया। आप जी। पिछले 5-6 महीने उठा के देख लीजिए, बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच, बिल्कुल बैलेंस्ड जवाब दिए गए। इसका मतलब ये रहा कि बहुत संजीदगी से भारत सर, बहुत इस मामले को डील करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, भारत ने इस पूरे के पूरे मामले को कन्फ्रंटेशन के उस पे जाने नहीं दिया अपने तौर से। भारत एक सामान्य प्रक्रिया में बना रहा, जो बयान आते रहे, ठीक है, आ रहे, जो जो कह रहा है उस पे प्रतिक्रिया नहीं दी गई, सीधी-सीधी ट्रेड पे बातचीत की गई। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा, ना मोदी का बयान आया, ना किसी अन्य उसका बयान आया। अमेरिका में इस चीज़ में एक बेचैनी हुई कि भारत अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो एक चीज़ इसने असहज किया। दूसरी चीज़ फिर जो आपने बताया कि जो ट्रेड के नंबर हो, चाहे इकोनॉमी के नंबर हो, अमेरिका ने ये कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जी। जी। तो जी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, और उसके तो मैं बाद समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि डेड इकोनॉमी और तमाम तरह के जो फैक्टर्स है कि एक तरफा प्यार था, एक तरफा वन साइडेड चीज थी मामले की, मैं छुप छुप बिल्कुल, के सब चीजों को देख रहा हूँ। अमेरिका को मार रहे थे, आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप बर्बाद कर रहे थे, बहुत शोषण किया गया है, और उसके बाद फिर आप कहना कि बिल्कुल, अच्छे मित्र हैं, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे मतलब सर मैं बिल्कुल, तो आपको बताऊं वही। कि मैं मार्केट को भी कवर करता हूं, मैं मार्केट के जी, लोगों से मैं जब बात कर रहा हूं तो लोगों में इतनी अनसर्टेनिटीज है कि लोग ट्रेड करने से डर रहे हैं, किसी भी तरह का जो पोजीशंस है वो लेने से सशंकित हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लंबी अवधि में क्या होगा, इस लेवल का अनसर्टेनिटी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो देखिए, जो ट्रेड के नंबर, जो भारत के जो पूरे इकोनॉमी के नंबर आए, चाहे जीडीपी का नंबर हो, चाहे इन्फ्लेशन के नंबर हों,
या जीएसटी के नंबर हों, उन्होंने ये दिखाया कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को या वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह की है और भारत कितना बड़ा मार्केट है और भारत की अहमियत अमेरिका के लिए इस वक्त क्या है। वो दौर देखिए विशाल, वो दौर गुजर गए जब भारत को दुनिया में न 3 में न 13 में गिना जाता था कि किसी हम्म। तरह की हैसियत नहीं है भारत की। अब वो दौर या सर बहुत आप पीछे गुजर गया एफआईआईस का है। आंकड़ा देख लीजिए ना प्रवीण सर, लगातार कहा जा रहा है कि साल दर साल एफआईआईस का जो आंकड़ा है वो निगेटिव में है, लेकिन डीआईआईस के पैसों के बदौलत भारतीय शेयर बाजार जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है, अडिग है और एकदम स्थिर है, कामकाज भी कर रहा है। उसको लेकर भी लोगों के बीच में शंकाएं भी है कि भाई नहीं देखिए बिल्कुल देखिए, एफआईआईस तो लगातार अब बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईस के बदौलत जो है भारतीय शेयर बाजार चल रहा है। नहीं बिल्कुल देखिए, अब आप इसको ऐसे समझिए कि भारत के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका एयूएम ही 75 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया है और वो जी अभी फ्रैक्शन है उसका जो हो सकता है, जितना पोटेंशियल है उसका भी फ्रैक्शन है वो एक जी, कहा जाए पच्चीस कि एक सौ हजार चालीस करोड़ करोड़ रुपया। 28,000 कर बिल्कुल अट्ठाईस जी हजार करोड़ रुपए महीने की एसआईपी का जाना, तो वो कोई छोटी तादाद नहीं है। और सेविंग्स और इंडिया का जो फाइनेंशियलाइजेशन है, जिस तरह से हाउस होल्ड सेविंग अब पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रही है, उसने मार्केट्स को स्टेबल बनाया है, चाहे इसको कुछ भी कहा जाए। जी तो ये नंबर दूसरा फैक्टर थे और तीसरा फैक्टर थी एससीओ की मीटिंग, जहां पे कि प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन जब एक साथ खड़े नजर आए, तो उससे पूरी अमेरिका सहित पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सिहरन फैल गई। तब दुनिया को समझ में आया कि ये जो डैमेज है इसकी त्वरित भरपाई अगर नहीं की गई तो हालात और खराब हो सकते हो। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का फिर बयान आया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भारत को चीन के हाथों गंवा दिया है। जी। और क्या जब वो सर ये एक एक बयान मेरा लिख ये रहे भी थे, सवाल है प्रवीण सर, प्रवीण सर क्या सेंस ऑफ एलियनेशन वाला जो फियर है वो कहीं ट्रम्प को तो नहीं कहा गया कि भाई देखिए अब ये जो तीन जो बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, मान लीजिए रशिया को देख लीजिए जो उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कहा जाता है, और फिर इंडिया और चाइना, जो इस तरह से कहा गया कि ड्रैगन एंड एलिफेंट विल मेक समथिंग बिग, तो इन तीनों के मिलने से तो नहीं इनको लगा कि मैं साला कॉर्नर हो जाऊं। नहीं बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक मैसेज था जो पिक्चर्स के जरिए, जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था कि कई बार तस्वीरों का भी इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। जी और उसमें जब तीन नेता एक साथ खड़े हुए नजर आए पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया के मीडिया में जब वो तस्वीरें गई, पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, तो उसने अमेरिका का जो पूरा जो थिंक टैंक है, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक जो जानकार हैं, उनके अंदर एक बेचैनी पैदा की कि ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर जो है वो अमेरिकन पार्ट से हुआ है, जहां उन्होंने भारत को चीन के पाले में जाने दिया। और उसी का कंसिक्वेंस है, अब आप ये समझिए, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को ये लिखना पड़ा या कहना पड़ा आके कि नहीं, हम अच्छे मित्र हैं, हमेशा रहेंगे अच्छे मित्र, मोदी अच्छे प्रधानमंत्री, वो सब पूरी कहानी। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको रेसिप्रोकेट किया। यानी भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। भारत भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जो 25 वर्षों में रिश्तों को की बुनियाद रखी गई है और जी पिलर एक खड़ा किया गया है, उस पिलर में किसी तरह की दरार आए। जी 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 जी। अब प्रवीण सर, अब आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे कि मान लीजिए इस खबर को कैसे देखा जाए मंडे के व्यू पॉइंट से, बताइए क्या ये बड़ा गुड न्यूज है भारतीय शेयर बाजार के लिए। नहीं बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय शेयर मार्केट्स के लिए भी और पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए भी। ये अच्छी खबर है, कम से कम एक शुरुआत एक बहुत अच्छी है, जहां पे कि सारी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही थी कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां से कि रिकवरी शायद ही मुमकिन हो पाए। भाई जब ये खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, तब इस बात के अंदाजे तो आप समझिए कि पक्का हो गया था कि भारत और अमेरिका के संबंध अब बहुत ज्यादा बुरी दौर में है। लेकिन अब इस बातचीत के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आज या कल में एक फोन कॉल पे बातचीत हो, और उसके बाद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाने का दौरा बने, और उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका में दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच में कोई 1-on-1 बातचीत होती हुई नजर आए। और अगर ये होता है तो आप समझिए कि ट्रेड डील पे भी आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा,
और साथ ही साथ इकोनॉमी और मार्केट्स दोनों के लिए ये सबसे अच्छी खबर इस वक्त की होगी। जी 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 सर। अब आपसे सर कुछ और पॉइंट पर भी चर्चा कर लेंगे। कुछ व्यूअर्स के सवाल भी है सर। मीना जी का सवाल है कि सर यूएस एनआरआईज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कदम से? नहीं, एनआरआईज को किस तरह का फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे अभी? इनको सवाल था शायद, एनआरआईज मुझे के लिए लगता है कि H1B वीजा को लेकर भी इनका सवाल हो सकता है सर जुड़ा हुआ। नहीं, देखिए, इमिग्रेशन को लेके अमेरिका जो सख्ती दिखा रहा है लगातार, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमी करेंगे। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक लंबा एजेंडा था जिसमें वो इमिग्रेशन रूल्स को सख्त बनाना चाहते हैं। अमेरिकन्स के लिए नौकरियां पैदा हों, अमेरिकन्स ही पैसा कमाएं या उनको तवज्जो दी जाए, इसको लेके एक उनकी क्लियर कट जो है वो सोच है, अप्रोच है। तो जी वहां कोई रियायतें फिलहाल जब तक ट्रंप का दौर है मुश्किल ही मुझे दिखाई देता है। जी। अब प्रवीण सर, जिस रूस के तेल की वजह से जो इतना जो कचरा देखने को मिला, मामला बढ़ता हुआ नजर आया, उस पर भी आपसे हम राय लेना चाहेंगे। देखिए, भारत ने रूसी जो तेल खरीद पर जो अमेरिका को जो कड़ा जवाब दिया था, कल जो माननीय केंद्रीय मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी साफ कहा था कि देखिए, भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, हमें कहाँ से तेल खरीदना है ये हमारा फैसला होगा। सर, इस पॉइंट को भी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या क्या शो करता है हमारा ये कमेंट? नहीं, भारत का ये कमेंट ये बताता है कि भारत अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, उसमें भारत किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। रूस के साथ संबंधों को भारत साफ तौर पे कहता है कि ये एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, जहां हर मुश्किल घड़ी में रूस ने भारत का साथ दिया है। एक बात। दूसरी बात, भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं वो इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अगर सस्ते में तेल मिल रहा है तो आप उसको खरीदें, उस मौके का फायदा उठाएं। और इस बात को डॉक्टर एस जयशंकर और तमाम जितने जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं वो बार बार, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो या जयशंकर हो, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि साहब, अगर हमको दुनिया में कहीं से सस्ता तेल मिल रहा है तो क्या भारत अपनी आर्थिक जरूरतों को देखते हुए उसको नहीं लेगा? क्या यूरोप जितना भारत लेता है, यूरोप जितना लेता है उसका 1/3 ही भारत ले रहा है? या चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का इस वक्त? और उसके बाद जब एससीओ बैठक हुई तो वहां से जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम $3 से $5 की एडिशनल छूट देंगे भारत को क्रूड पे। जी तो और उसी के बाद फिर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ तेल की जो परचेज है उसमें किसी तरह का बदलाव करने नहीं जा रहे। तो लेकिन जी अमेरिका को ये बात साफ तौर पे समझ में आ गई है कि भारत अपनी इस स्ट्रेटजी पे पीछे हटने वाला नहीं है, और जो जी रूस और यूक्रेन की जंग रुकेगी वो दूसरे फैक्टर से रुकेगी, किसी जी दूसरे तरीके की डिप्लोमेसी से उसको रोका जाएगा। सर, आपने रूस को इस पिक्चर में लाया है, तो सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, पुतिन साहब का भी एक कमेंट आया था जिसको कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जिस लहजे में अमेरिका जो है भारत और चीन से बात कर रहा है, उस लहजे में बात नहीं की जाती, उस लहजे में ट्रेड डील नहीं की जाती, वैसी बातचीत होती नहीं है। सर, इसको भी आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, रूस और भारत लगातार साथ बने हुए हैं। रूस को भी ये समझ में आ रहा है कि उसके लिए, देखिए, रूस भी दुनिया में एक तरह से आइसोलेटेड बना हुआ है। दुनिया में किन मुल्कों के साथ रूस का जो कहें कि अच्छे रिलेशनशिप हैं, उसमें एक आपका ईरान हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा नॉर्थ कोरिया हो गया, चौथा चाइना हो गया। ये तीन चार चार बड़े मुल्क हैं। इनके अलावा पूरी दुनिया से रूस एक तरह से आइसोलेटेड है। तो ऐसे में रूस को भारत और चीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उसको, चूंकि वो जो पुतिन है उनको अपनी डोमेस्टिक भी जो पॉपुलेशन है उसको देखना है, अपनी पॉलिटिक्स को देखना है, और खुद को बचाए भी रखना है इस पूरी जंग में। जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उससे वो एब्रप्टली बाहर आ नहीं सकते। तो वहां पे एक सेफर जो साइड जिस तरह की डील चाहते हैं वो अगर उनको करना है तो उनको कम से कम दुनिया के दो बड़े लेकिन इन सब के मुल्कों बीच का प्रवीण सपोर्ट सर, चाहिए। एक राहत भरी खबर ये है कि अमेरिकी टैरिफ से जो भी कहा जा रहा था कि जो प्रभाव पड़ेगा, जो इफेक्ट पड़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए राहत पैकेज देने की बात कही जा रही थी कि मोदी सरकार जो है आप उनको राहत पैकेज देगी। जिन सेक्टर्स के मैं बात कर रहा हूँ आप बखूबी जानते हैं, कपड़ा हो गया, गहना हो गया, चमड़ा, कृषि और अन्य क्षेत्र को
कहा गया था कि हम लोग एक राहत पैकेज देंगे ताकि जो है उनको तगड़ा जो झटका लगने वाला है वो ना लगे। बेसिकली एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से जो कोविड के दौरान जो मदद की गई थी, ठीक उसी आधार पर कहा जा रहा था कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी मदद देने की बात की जाएगी। सर, अब उसमें हल्की राहत मिलती हुई नजर आ सकती है अगर सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाता है। बिल्कुल, देखिए सरकार को भी यहाँ से ये बात समझ में आती है कि सरकार को भी इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी या कतई इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब दुरुस्त हो सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने अपना पूरा मैकेनिज्म या पूरा जितना फोर्स था उसको खोल दिया, चाहे आम लोगों को राहत देने की बात हो या एक्सपोर्टर्स को राहत देने की बात हो, जिनको कोविड लाइक जो है कोविड की तरह के जो मॉरेटोरियम और बाकी चीजें सरकार देने के लिए पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, ताकि वहां जॉब लॉसेस ना हो, ताकि वहां पे जो कारोबार है, धंधा है, वो खत्म ना हो, एमएसएमई बंद ना हो, क्योंकि जी। कोविड के दौर में बहुत कोशिशों के बाद भी बड़ी तादाद में जो छोटे कारोबार थे, वो टिक नहीं पाए, वो बच नहीं पाए। तो सरकार ने इस बार बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है और जैसे ही लगा कि अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो सकते हैं या एडिशनल टैरिफ लग रहे हैं, सरकार ने उसको लेके अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी। एक आम लोगों के मोर्चे पे राहत दी गई, दूसरी अब एक्सपोर्टर्स के लिए। तो सरकार पूरी तरह तैयार है और अब जो अगर डील हो जाती है तो जाहिर तौर पे सरकार को भी एक राहत मिलेगी कि कम से कम उसको विशेष जो इंतजाम करने हैं वो सरकार को अब नहीं करने पड़ेंगे बेचारा। चलिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को लेकर यू टर्न मारा है, जिसको लेकर हम लोगों ने लगातार अपने मनी सेंट्रल में भी और मनी 9 पर भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। पूरी चर्चा को बहुत ही आसान में विस्तार के साथ होने की कोशिश की है। प्रवीण सर और बिल्कुल और प्रवीण सर, जी जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल ये है। और जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कल जो बड़ा बयान दिया है वो देखिए, इस जो लाइव वीडियो में हम उसको जनता को अपने दर्शकों को सुनाने की जो है वो कोशिश करेंगे चलिए विशाल। सर, चलिए तो जी। तो प्रवीण सर, मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि जो वीडियो जो चल रहा है ऑन स्क्रीन पर उसमें आवाज दे दी जाए। और प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। थैंक यू विशाल, थैंक यू। News conference, and I would say that they were illegal aliens, and ICE was just doing its job. But I know nothing about the instance. It happened a little while ago. Okay? There has been some pushback on that, though, from South Korea already, and of course, they pledged to invest $150 billion in the U.S. Just here, last week. Are you concerned? Well, and they have the right to sell cars and things in our country. It's not like a one-sided deal. Are you concerned at all about your immigration agenda potentially clashing with these economic goals? Well, we want to get along with other countries, and we want to have a great, stable workforce. And we had, as I understand it, a lot of illegal aliens, some not the best of people, but we had a lot of illegal aliens working there. So, look, they're doing their job. That's what they have to do. These are people that came through with Biden. They came through illegally. They came into our country. So we have to do our job. Mr. President, the now Department of War has been involved in the crime cleanup in D.C. You tasked Congress with proposing and passing a crime bill. What are some things that you would really like to see codified in that crime bill? Well, I think one of the things is the cashless bail. It's killing it. When that came out, the first time, that's when you saw the real big crime start to happen. Cashless bail, what a disaster that is. You murder somebody, you don't have to put up bail, and you go out in the street and you murder somebody else. That's what's happened. It happens so often. And that's one of the things. And other of the things you're reading about, it's a standard, but just a certain toughness. I have to say, one of the elements of fascination for people over the last period of time has been what's happened to DC. So we've gone from one of the most dangerous cities in our country to what they call a safe city. It's a totally safe city. In fact, I set up dinner in Washington, D.C. next week. I wouldn't have done that, to be honest. I would have had an obligation not to do it before I came into office, or even at the very beginning when things were so corrupt and so dangerous out on the streets. So Washington, D.C. has had virtually no crime. We even have a mayor that's admitting to it, and she's a liberal Democrat, in all fairness. She's a person that
hasn't gotten exactly along with Republicans over the years. And she said she's never seen anything like it. So Washington, D.C. is a totally safe city. We have virtually no crime. It's gone from the most unsafe city in the United States, almost, just about, to one of the safest cities, maybe the safest city in the United States. That's a tremendous compliment to our military, what we did. The National Guard's done a fantastic job. Yeah, please. Mr. President, can I ask about Florida? Like Florida House Speaker Daniel Perez was at the White House yesterday as part of a leadership summit. Yes. And we understand you met with him separately. Mr. President, what did you talk about? And also, did you explore him running for Florida Attorney? I didn't. We didn't talk about that, but he's done a fantastic job. He's respected all over the country, really. He's a leader, and he's done just a fantastic job. We didn't discuss anything having to do with his future. I'm sure he'd be very good at that. My second question, Alligator Alcatraz, sticking with Florida, a major ruling appeals court blocked a federal judge in order to close it, and if you remain open for now, your reaction? I think they've done a fantastic job in building it, the governor and everybody else that's been involved. It's an incredible facility. It's housing people for usually a very short period of time before they get brought back to their countries. As you know, we focus on criminals before we focus on anybody else, and we're taking thousands and thousands of criminals out every month out of our country, some of them murderers. And I think Florida's done a great job by building it. And whether it's Alligator Alcatraz or anything else you want to call it, I was there. I visited with the governor, with other people. I guess Nikki was there. Tom Homan's been there a lot. A lot of people have been there it's an amazing facility for what it is. It's not a hotel. It's not supposed to be a hotel, but they've done a great job with it. And I'm very happy with the judge's decision. You also mentioned Venezuela. I want to ask one more follow-up question on that. On the U.S. strike on the boat tied to the Venezuelan drug cartel, the Maduro regime is pushing back today. In fact, they say the U.S. seeks regime change through military threat. Your reaction to those words, and also, would you like to see regime change in Venezuela? Well, we're not talking about that, but we are talking about the fact that you had an election which was a very strange election, to put it mildly. I'm being very nice when I say that. I can only say that billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. The prisons of Venezuela have been opened up to our country. They've taken their prisoners, the worst prisoners, murderers, Tren de Aragua. The worst prisoners that you can ever imagine are now happily living in the United States of America. Now, many of them we've gotten out. It's not easy to get them out because of the liberal system that we're working with in many cases, not in all cases. But millions and millions of dollars and billions of dollars of drugs are pouring out of Venezuela and other countries. Look, China, what they're doing with fentanyl is a terrible thing. It comes through Canada and it comes through Mexico, but a lot of it's coming through Venezuela. Venezuela's been a very bad actor, and we understand that. And when you look at that boat, you see the bags of whatever it is. Those bags those bags represent hundreds of thousands of dead people in the United States. That's what they represent. Yeah, please. Mr. President, your reaction to the jobs report this morning? Well, I'm going to talk about that in a minute. We have our great people here, so I'll talk that in a minute. Let's talk about this. We'll give a couple of because these two people want to get to work on the Department of War. So let's keep them first. Yeah. Mr. President, the DOJ is reportedly considering a ban on transgender people owning guns after the Minneapolis shooting. Do you think that Are we talking in the military? No. Okay, I thought you were talking about in the military. I'll refer to that then differently because it's not a military question. I'll be able to pass on that very nicely unless you'd like to talk about it. Pete doesn't want any part of that question. Yes, please. Mr. President, who do you blame for losing India to China? In your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. It was so
such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House. Okay. And it's been very well received. But we had a news conference on the grass. That was my last news conference I had on the grass because everybody sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there, they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well-received change. Yeah, please go ahead. On Venezuela. You've sent F-35s down to Puerto Rico. You've sent naval vessels into the Caribbean. You're concerned about drugs being illegally sent into the United States. How do you describe this buildup, this situation? Well, I just think it's strong. We're strong on drugs. We don't want drugs killing our people. I believe we lost 300,000. You know, they always say 95, 100,000. I believe they've been saying that for 20 years. I believe we lost 300,000 people last year. I know families that lost their son. Those families will never be the same. I know a family lost a daughter, a beautiful daughter. In fact, it was like she took something that she thought was like a minor deal, and it turned out to be riddled out with fentanyl, the size of the head of a pin, and you're dead. And no, we're stopping the drugs. We're going to save a lot of people. Look, whether it's 100,000, but it's not. It's 350,000 people died last year from drugs. And we're not going to let that happen to this country. Think of that. Think if you're in a war and you lose 300,000. We'll lose 600,000 in the pretty much between Gettysburg and all of that, the Civil War. We lost, 600,000. So we're losing half of that every year to drugs. We're not going to do it. We're not going to allow it to happen. You think of the wars. If we lost 600,000 people in a war, but we lose that every 2 years, more than that. So it's 300 to 350,000 people. And when I see boats coming in, like loaded up the other day with all sorts of drugs, probably fentanyl mostly, but all sorts of drugs, and we're going to take them out. And if people want to have fun going on the high seas or the low seas, they're going to be in trouble. I will tell you, boat traffic is substantially down in the area that happened. And they called it the runway. It's a runway to the United States. And boat traffic is very substantially down on the runway. You can imagine why. I think anybody that saw that is going to say, I'll take a pass. I don't even know about fishermen. They may say, I'm not getting on the boat. I'm not going to take a chance. What happens if Venezuela flies jets over U.S. naval vessels again? Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Sure. Sir, How close we did they get, have one more. President? You said they didn't go over. Say it. How close did they get? You said the planes didn't. Well, I don't want to talk about that, but if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Thank you very much, everybody. So we're going to now cover the G20, and I'm going to let these people go back to the Department of War and figure out how to maintain peace. Okay? Thank you very much. Thank you. Congratulations, General. Thank you very much. Appreciate it. Great job. Sir, just before G20, we do have one more EO Okay. for you today. And I should also say that the Department of War EO that you signed was actually your 200th EO since you Wow. came back into office on January 20th. That's more than Joe Biden did in his entire term in office, more than Obama did in either of his 2 terms in office. So it's a momentous accomplishment, and congratulations. That's good, but Biden never signed one. No, yeah, They you've were done signed every by one the- up in here. They've been signed by the auto pen, right? Didn't he? So we really beat him by much more than you think. The 201st executive order, sir, this relates to hostages and wrongfully detained Americans. This provides a new legal mechanism to declare foreign countries to be countries that engage in those sorts of practices and gives your administration powerful tools to get American hostages out. This has been a Right. focus of your administration this time around. Adam Bowler's here, and he's done incredible work already. This will give him even more. I think it's great, and more Adam's tools. amazing. So Adam, do you want to describe how many hostages we've gotten out together, you and I, and you and a couple of other people that we know, and Yes, me and a couple of other people that you don't know, but we've gotten a lot of hostages. Do you want to describe it? Mr. President, you brought Sure. back 72 hostages since your term. If we compare that to President Biden, he has gotten 20 taken. So he is negative 20 taken. 20 taken. They don't take our people so Yeah. often. So, Mr. President, That's good. when we spoke, you said
that was a primary focus. And I'll tell you, the job is easy because of you. And we paid nothing too. We pay nothing. We They don't pay 6 exchange. billion. They always paid 6 billion for 5 people, 6 billion. It was just a number I kept hearing. Not only that, 6 billion plus we'd get like one person and they'd get 6. They got one, the Prince of Doom, they call him. He was the #1 arms merchant anywhere in the world ever. And they got him out. And on top of that, we paid money. So, no, we don't do that. You know, once you pay money, then a lot of people start disappearing. They start grabbing reporters too. They think the reporter is going to get a lot of money. And to me, they would. You'll be well taken care of. I better stress that because otherwise we have headlines. He said this or he said that. No, I'm not smiling about it. But they would. They'd be grabbing reporters. They'd be grabbing everybody. And especially when you pay the kind of money that Biden and Obama, they used to pay money that was crazy. We don't pay. And if you don't pay, they find it to be not a lucrative business anymore. That's fantastic. Would you like to say something? So it's really Spihar, Special Envoy Bola, it's Rick Grinnell, it's Steve Witkoff who brought Americans home. But with this EO you are signing today, you are drawing a line in the sand that US citizens will not be used as bargaining chips. And it provides your Secretary of State, Marco Rubio, the same tool set to punish states who take our citizens wrongfully the same way that we can punish those who sponsor terrorists. This is a very significant EO you are signing today, sir. Thank you, Sebastian. Very good. You're doing a great job, too. And this is your director for hostage affairs at the NSC. Yes, and I hear. So Julia was seminal as well to all of this. I heard you're doing unbelievable. Very important subject. I think it shows a lot of your leadership as far as fighting for Americans and fighting for humans. And to think that, Joe Biden went in negative territory. Oh, he went way negative. Way negative, and you're actually making progress on this. I think this does send a message to the world that we don't negotiate, we're going to stay strong in that type of what they call business. Well, one little anecdote that may be of interest. We were told by numerous families who had missing loved ones during the Biden administration that this building, Biden's National Security Council, told those families not to talk about their missing loved ones, to be quiet, not to create any pressure on Biden and on Jake Sullivan, the key propagator of the Russia hoax. This administration has met with those families on a weekly basis. Right. People like Adam, yourself, sir, your envoys are doing everything to get every single American home, not to tell them not to talk about their loved ones, but bring them home. Well, I can tell you one story that was amazing. A few weeks ago, very little written about it, but there should have been. But it was a very nice gesture. The head of Belarus, who's a very respected man, strong person, strong leader. He released 16 hostages. John Cole, a lawyer who works for me, great lawyer, actually, one of the greatest lawyers. But John Cole was over there and he heard that they had hostages. And you know about this, 16 people he released. And I just want to thank the head of Belarus. But while John was over there, they had, I believe, another 1,400 hostages. Now, not from us, from places all over the world. And just pretty tough place, in all fairness. But they had 1,400. And I believe they're going to be releasing a lot of those 1,400. They're not, I think very few, if any. We got pretty much ours back.
And we didn't pay anything, but I very much gave my respects to the leader of the country. Was again, he's a very strong man, but he's got 1,400 or 1,500 or a large number, and we're talking about releasing them. Some are political, I guess. A lot of them are political, and looks like they're going to be released at some point in the pretty near future. So it's a great thing. They have to respect your country. If they respect you and they respect your country, they release it. If they don't, then you have to pay $6 billion. I mean, $6 billion. Can you imagine that, paying $6 billion? Kind of related, but not really. But could you comment on Tina Peters, who's been locked up behind bars from Colorado within the election? I think you put out a truth a couple days ago about it. We have a wonderful woman who was an election official, and she saw cheating in Colorado, and she viewed it as horrible. And she said, "What's going on here?" And she went to the machine and she tried to open to find out whether or not it was cheating. And they went to her and they said, "Did you touch this machine?" "Yes." And they arrested her. They arrested her instead of the people that did the cheating. It's a state charge, so it's hard to do anything with, but we're gonna do something. What they did in Colorado, look, Colorado just went to all mail-in voting. That means they cheat. That's why they lost. That's one of the reasons, but that's a big reason why they just lost the whole Space Command situation that is going to Alabama. But when you have mail-in voting, you have nothing but cheating. But this woman is a real patriot, and they put her in jail for a long time. She's 72 years old, 73 years old. And she wanted to find out. She didn't do anything. She touched the machine. She looked at the machine. She's trying to find out what was going on. And they went and arrested her for doing that. And it was supposed to be the other way around. I'm glad you brought that up. They should let her go. Let her out. Thank you. Yeah, please. This isn't really a subject that's talked a lot about, Mr. President, but what about your team's strategy has made this well back to getting a record amount of these hostages, many of whom have been forgotten about home? I think they respect us. I think they respect us. They know what to pay. Adam is a great negotiator. Steve Witkoff is a great negotiator. Seb is a great negotiator. They're all smart people. They're a little bit natural negotiators. Some people aren't good negotiators. Nothing you can do about it. And they're afraid of you, sir. Yes. Yeah, well, maybe. I don't know. I hope so, or whatever. We have the best. I'd like to say respect, but whatever it takes. Yeah. I actually say whatever it takes. But we've gotten a lot of people out, and we'll continue. We don't have too many in. How many are you working on right now? There's not a lot left. We got most of our people out. We got them mostly back. Mr. President, do you have an update on the negotiations to release the rest of the hostages in Gaza? We're in very deep negotiation with Hamas. We said, let them all out right now, let them all out. And much better things will happen for them. But if you don't let them all out, it's going to be a tough situation. It's going to be nasty. That's my opinion. Israel's choice, but that's my opinion. They got to let them out. You got 20 plus you have about 38 dead people, young, beautiful, dead people. And I'll tell you, the parents want them every bit as much, almost more than as if their son or daughter were alive. But you have many dead people that are coming out as part of the deal. It's 20 people, but I think of the 20, there could be some that have recently died, is what I'm hearing. I hope that's wrong. But you have over 30 bodies in this negotiation. Can you believe? I mean, we negotiate for people that are living here. We know that at least 30 people are dead, and we're negotiating to get them out. The parents want them back so badly, as if they were alive. Every bit as much. It's really pretty amazing. It's very sad. I'm in the middle of it. And I put out the other day, I said, we want all 20. We don't want to, I was the one with myself and my people, Steve Witkoff and Jared Kushner was great on this. But they got a lot of people out. We got almost all of them out. They're down to 20. But Adam, we got like a tremendous number out. But I always said, when you get down to the final 10 or 20, you're not going to get them out unless you're going to do a lot. And doing a lot means
capitulation, that's no good either. It's a very tough situation. But I put out the other day, let them all out. Every single one. No more twos and ones. We'll give you one this week, and in 2 months, we'll give you two more. And there's negotiation going on right now. Okay. And real quick, what is the biggest challenge negotiating with Hamas right now? 10 to 20, what do they want to let them free? Well, they're asking for some things that are fine. Look, you have to understand, you have to remember October 7th. You know, people forget October 7th. It's not an easy thing to forget, right? But people forget, or they maybe purposely forget October 7th. So, you know, you have to put that into the equation very strongly. It's amazing. Some people even deny it. They deny it. They're crazy. But I've seen tape that's as violent as anything that you can imagine. Many of you have seen those same tapes. So you have to put that into the equation too. So it's not an easy situation. It's a tough one. But there are 20 people, maybe a little less, but there are 20 people that we want out. We want the bodies of these parents. They are, I've never seen anything like it. The level of love that they have, they want their children back. And, you know, I see demonstrations, big demonstrations in Israel about the hostages, not about the war, about the hostages, which puts Israel in a tough position because, you know, it's tough to prosecute a war when you have people they want the 20 people back. They just want them back very badly and everything that goes with it. So it's very sad. Thank you very much. We're going to talk now about the G20. I figured we could wrap 2 or 3 up. The last time I took a day off, everybody said bad things happened to me. You know that, Seb? I took 1 day off. I didn't take it off. I was working. In fact, I was here. But I didn't do a news conference, and they said bad things happened to the president. That's why that's fake news, Mr. President. It's fake news. You know, if you look, Biden, he had a press conference. He missed it for about a year, right? About a year. And I never saw any stories like that about him. He didn't have, and when he had one, they'd ask him, what flavor ice cream do you like? He'd say vanilla. How many times have they asked him that question? What's your favorite ice cream, sir? Vanilla. Okay, that's enough. Thank you, ladies and gentlemen. They don't have to go through this, but we all have a good time. I only do it for one reason. I think it's good for the country. And we are very transparent. There's never been transparency like we have. There's nothing to hide. So thank you very much on this, Will. Great job. Appreciate it. So we're going to talk about Florida, the great state of Florida now, because it's going to be a very exciting thing to host the G20. And as we celebrate our nation's 250th anniversary next year, the United States will have the honor of hosting exactly that, the G20 summit right here in America for the first time in nearly 20 years. This afternoon, I'm thrilled to announce that the 2026 G20 conference, which will be, I could read off the countries that we're talking about, but you know who they are, I think. Does anybody want me to list them specifically? Jennifer, you're okay? Okay, but will be held in one of our country's greatest cities, beautiful Miami, Florida, where we have the mayor with us, Mayor Suarez. And I want to thank Francis for being here. I thought he might be in this office. You know, he almost got there. It was a couple of votes. Right? A couple of votes. It's not as easy as they think, right? It's not that easy. But he's an amazing guy, very popular in Florida. The agenda for next year's summit is being organized by Treasury Secretary Scott Bessent, who is right here. Hi, Scott. I saw him standing over there, nice, tall, good-looking guy, but he moved very quickly. Carolyn, you did a good job. Does Caroline do a good job, would you say? Is she a star? How do you compare with the last administration's person? No? You don't want to get into that. Yeah, I think we're very happy with Caroline. But Scott Bessent is talking about a good job. He's done a fantastic job, and we're very proud of him. He's very much involved with the G20. And the NEC director, Kevin Hassett, is truly a talented guy. He's certainly being thought of to go to a different position, and we'll find out about that pretty soon. I don't know. Would you like to be that? I won't ask you that question. I think, who wouldn't want? I think it's the greatest position in the world.
You know, you come out, you make a speech, and then you go away for 30 days or 40 days, and you come out, make another speech. The market goes up or down depending on what you want to say. I've never seen an easier position than that. Unfortunately, you need good instincts. So we have somebody in there now that doesn't have them. We call them too late. But it will focus on unleashing economic prosperity by eliminating the burdensome regulations, unlocking affordable energy, and pioneering new technologies. And it's going to be very important. The United States is already leading by example, and America is the hottest country anywhere on earth. We have more being built under construction now than they think anybody that they've ever seen. I mean, literally, some of these places are just really unbelievable what they're building, the size. You know, if you spent $50 million on a shopping center someplace, it's a big building, pretty big building. But when you spend $50 billion on essentially a building is going up for $50 billion. They're going to be building their own electricity. And many of them have been given permits already to go, and they're starting construction. Some have started construction quite a while ago, and very early in the administration. We let them do that. You know, we have a grid that's obviously an old grid. It's been around for a long time. Could never handle the kind of numbers that you're talking about in terms of electricity, and we're letting them build their own plants. They build their own plants with their structures. So they build their structure, they build their buildings, and they build an electric producing plant with it, like Con Edison in New York that I grew up with, and like others that make electricity. They make it for New York. These plants will make it for their building, for AI. Then you have a lot of the car plants going up. Most of them won't need that kind of electricity, but they have the right to do that also. So we're allowing companies to build electric plants. They become essentially, Scott, I guess they become utilities, right? If you think about it. And it's very exciting. We're going to end up with more electricity than China, and it's going to be built at no cost to us. And I'm telling them, build more than you need, and you'll sell it back into the grid. So they'll be able to sell it back into the grid on top of everything else at no cost to the American taxpayer. It's very exciting. And frankly, if we didn't do that, we wouldn't be leading with AI. We wouldn't be probably even doing any AI. It would be 20 years to get an approval. So they're building massive amounts of electricity as we speak. We've eliminated $5 trillion worth of federal regulations, another big thing since I took office. And if you remember the first term, we took out more regulation than any other president in history times. You could add the top four, and they wouldn't come anywhere close to what we were. That's one of the reasons we had such the most successful 4 years of any president economically. And this is blowing it away. I think this will blow it away when these plants start to even getting close to opening. I think you're going to see numbers that we've not seen before. And we've increased oil production by more than 300 barrels a day. That's a lot. Blue-collar wages are rising at the fastest rate in 60 years, and trillions of dollars of investment is pouring into the USA. It's going to be over $17 trillion very shortly, and nobody ever thought a thing like that was possible. What made it possible were, number one, they were happy with November 5th. They were happy with the election. And number two, the tariffs are bringing countries in. I mean, it's so vital to our country. It's before the courts now, and I hope we're going to do very well. We had 4 great opinions just come out, as you know, from judges. In a couple of cases, there were Obama-appointed judges that felt they had to do what was right for the country. So I respect that greatly. I respect them for doing it. But we have very strong opinions, and it'll end up going to the Supreme Court. And it's just vital for the country. Vital, absolutely. We're at a level that we've never thought we'd be at, and it's because of the tariffs. Countries are pouring into our country because of you avoid tariffs if you build here. If you don't build here, you pay a lot of money. But if you build here, so what people are doing is they're coming in, they're building here. No different than what other countries have done to us. But we have a big advantage over other countries. We have a market that we built up during our 4 years. That was amazing. We took a commanding lead during that 4-year period. So it's a very exciting thing, but I look forward to showing our incredible success to the world when we visit Miami next year. And I'd like to ask Mayor Suarez, truly a highly respected gentleman who's loved in his city. And
we're gonna do a great job. We're gonna work together and do a fantastic job. Mayor, would you say a few words, please? Of course. Thank you, Mr. President. It's a tremendous honor to be with you here today in the Oval Office to make this historic announcement. Just looking at the sign, which is so beautiful. Good job. Yeah, it's a great job. As you know, Mr. President, you were elected by double digits. You were the first Republican president over 30 years to win Miami-Dade County. And you did it because you followed through on your promises. And in Miami, what we're doing is we are following through on those promises as well. We've kept taxes low. We've kept people safe. We've leaned into innovation. We've grown 150% in the last 10 years. We've created one of the most intriguing ecosystems in the world. And this decision is not only generationally important for the city, but it puts the city on the map as one of the truly great global cities. So on behalf of all of the workers of Miami, those that work in the hospitality industry, I know you own many hospitality assets and properties, all of the small business owners who are going to benefit economically from having the G20 in Miami. Tremendous benefit. It's going to bring in millions and millions of dollars. We just say thank you. We thank you for believing in us. We thank you for highlighting our city in a time where we have the lowest homeless rate in 11 years. We're on the precipice of having the lowest homicide rate in history and with the lowest taxes. So we're following your America First agenda, and we're creating success in, Miami's the greatest city in the world, we believe. Thank you, Mayor. We'll see you down there. We'll see you down there before then, but we'll see you down there. Scott, would you like to say a few words? Yes, sir. So we're excited to have the G20, and what's important about the G20, President Trump's America First initiative does not mean America alone. It means America leads. So we will be holding the G20 in the capital of the world, Miami, next year to showcase the beginning of President Trump's second term. Will be a year and a half into it. We will have done peace deals, tax deals, trade deals. We've made the U.S. the best place to come start a business, have tax certainty, energy certainty, and regulatory certainty. And it's going to be an exciting event. And the U.S., just as the president was saying earlier about the Defense Department of War, the U.S. is back on the international stage as a leader. We have whittled down the G20 back to basics. We are making it work for the American people better than ever. We have the G20 had become basically the G100 this past year. So it will be a concentrated group in Miami, seeing the best America has to offer with American leadership, thanks to President Trump. Thank you very much. Great job, and a great job you're doing. Kevin, would you like to say a few words? Mr. President, I think this G20 meeting where the world leaders will come to the great city of Miami is going to be viewed as one of the most important meetings in global history, because what's going to happen is the golden age is going to be documented so well in the data by next summer that you're going to have one of the best speeches written for you that you've ever seen, because we're just going to be talking about the accomplishments of the next year. I think so. A lot of these plants are going to be open by then. Yeah, exactly. And a lot of jobs are coming in like I think we've never seen before. It's going to be good. Monica, would you like to say something? Thank you, Mr. President. We're so looking forward to having the United States of America host the G20 in Miami in December of next year. And we're also looking forward to having this as a showcase of American strength, vision, innovation, and power under your bold leadership, Mr. President. It is going to be the G20 in the Trumpian golden age. Thank you very much. Any questions on the G20? G20. You just said a moment ago that you were very complimentary of Kevin's work, and I was just wondering if he's your fan of that. Of Kevin? Yes. Yeah, I am very complimentary. I think he's fantastic. And for the fan, he's your man. I didn't say that. I said he's fantastic, but no, I sort of know who I'm going to pick, but no, I didn't say anybody in particular, but Kevin is certainly one of the three. They say four, but probably three, that he's a highly respected person. He's great. He's great. He believes in low interest rates, and we all do. But sometimes you have to raise them to stop inflation. We had the worst inflation, I guess, essentially that we've ever had in the Biden administration, and it really hurt people. Costs are way down. Our energy costs are way down. And, when energy comes down, everything comes down. And we brought down the price of groceries and specifically the price of eggs. You remember that first week when you were screaming about eggs? I said, I know nothing about them. I just got here. That's Biden's problem. But we got the cost of eggs down to really low numbers. So we brought costs down for people. And, it's something I said. And,
the Democrats have this false narrative. They say, oh, costs went up. They just say things that it's just like incredible. If you look at energy, I think you're going to be at $2 a gallon with cars very shortly. $2. It was $4, $5 under the Democrats. That's a huge, it's like a massive tax cut. And speaking of tax cuts, we gave you the largest tax cut in history in the bill that we just approved. The largest tax cut in history. And there'll be no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. One of the big things you get is you buy a car and you borrow money to buy the car, you're allowed to deduct your interest, which, Scott, has never happened before. You know, rich people like to talk about deductions. Middle income, they never gave them deductions. I got them one of the best deductions, an interest deduction. So it's great. Jennifer, please. Yeah, a couple questions on the G20, sir. Is there any update on your plans to attend this year's G20? And then are you saying for next year? I won't be going this year. It's in South Africa. I won't be going. JD will be going, great vice president, and he looks forward to it. But no, I won't be going to that. And then on the guest for 2026, are you saying it'll just be exclusively the 19 countries with 2 blocks? There won't be any? No, we're going to invite other countries as observers. They call them observers, but they'll have something to say. But we're going to invite Poland. Already I've issued them an invitation. They're great. They were just here, as you know. Great leader, great new leader. One of the big surprises, I was so happy I endorsed him actually, and he won. And he's going to be a great leader of Poland. But I've invited Poland already. What about Russia? What about Russia? Oh, that's interesting. I haven't thought of that. No, I haven't thought of that. That's an interesting question. I'm going to think about that for a little while. Mr. President, you just mentioned the tax cut bill. Why the rebrand from One Big Beautiful Bill? Oh, I just save words. I said the bill. It's one big. I actually call it the great. I actually call it the great big beautiful bill. But it's a lot of words. Is that how you want Republicans to kind of talk about it? I just want them to say what's in it. It's an incredible bill for the middle class, for the working person. You know, we are a party of the working. It used to be the opposite. The Democrats were for the working people and the Republicans were supposedly for the rich. The Republican Party's taken in millions of people and the Democrats have lost millions of people. They've gone crazy. Honestly, I think they're crazy. What's happened to them, I don't know. They suffer major Trump derangement syndrome, and it's turned out to be actually a disease, but it's a disease of weak people and stupid people because all we do is we cut taxes, we create great policy. Their policy is so terrible. They refuse to acknowledge, as an example, I see today, it's a big debate again, the women, they don't want men playing in their sports. They don't want it. The Democrats want men to play in women's sports. I saw the great governor, we have Governor Youngkin talking about it today, that the woman who's running against our Republican candidate, who's excellent, is like so much into the, men being able to use women's bathrooms. Okay, what's that all about? Men playing in women's sports, wants open borders. Again, once they want actually, after what we've gone through with millions, I think 25 million people came in from prisons, from mental institutions, drug dealers, drug addicts. They're pouring into, they poured in. Now we have none coming in. The border's been sealed for a long time, actually, almost since I got into office. Remember when the Democrats said we need legislation? I didn't have any legislation. I said close the borders. And now the borders for the last 4 months, not one person has been allowed to come into this country illegally, not one. Done by people that would normally like to see you look bad. Those are the numbers. So it's been an amazing job. Yeah, please. Mr. President, this is going to be a major event and a major meeting for South Florida for you, for Mayor Suarez. I know this is not until next year in Miami, but do preparations begin today? And so, what is being done? They've already begun. We will first have to deconflict our Basel with the dates. And so we have already started doing that. And so thanks to the president's team. He started a long time ago, actually. If you knew him, he was working on this long before this press conference. Yes, sir. It's in good shape. Going to be great. Mr. President, we learned this morning that we've lost 78,000 manufacturing jobs this year. How do you explain
Well, one thing we have is, we have the interest rates are too high. That was, a matter of the Fed. But the other thing is, so many different elements aren't included yet. And one of the things we've learned, and we learned that the hard way, watching over the last few months, are the corrections that people have been making. They'll say you're losing jobs, and then they say, by the way, we have a correction a month later of, 100,000 jobs are missing. They actually had a correction once of 850,000 jobs. But I'll let Kevin just speak about that a little bit, because I heard him speaking about it this morning. I thought he did very well. Please. Thank you very much, sir. Well, I think that if you look at the indicators, there's capital spending boom, industrial production at an all-time high. The Atlanta Fed says GDP now is north of 3%. And so all the indicators are saying that things are really strong. And what we've also seen is that Goldman Sachs put out a study yesterday that said that the August number tends to be really messed up because of seasonal adjustment things, and they tend to be revised way up. And so I think if they were revised up, which has happened on average over the last 15 years by about 60,000, then everything else would make sense. But right now we're puzzled about the BLS numbers and looking forward for new leadership there to make it so that the numbers are more reliable. And again, we're building, they've started building all of these factories and plants, including car factories. Car factories are coming back. We lost more than 50% of our car production over the years. And I think we're going to get all of it back. It's coming back in really rapidly. Really, we're building a lot of car plants. Indiana, places that you don't think of it so much are taking, but also Detroit, lots of places it's coming in where I think we're going to get everything. We've lost it over a period of 40 years, and I think we're going to get it all back in a very short period of time. And big ones, big plants, incredible plants that were never going to come back without the tariffs. They wouldn't have come back. And I think without the election on November 5th, they wouldn't come back either. The election was very important also. Yeah, as we've been here, Mayor Adams of New York has announced that he's staying in the mayoral race there. Can you react to that at all? No, I mean, he has to do what he wants. No, I mean, he's free to do what he wants. It would seem to me, and everybody in this room, including you, that the only way you're going to beat the communists, because you have a communist running, which is fine. I'll have to deal with a communist in New York City. I never thought that was going to happen. This is something I didn't think was going to happen, Scott. You're going to have to explain this one, because we're going to have a communist mayor. It would seem to me that if he stays in, if you have more than one candidate running against him, it can't be one. If you have one candidate, if he's the right candidate, I would say that Cuomo might have a chance of winning if it was a one-on-one. If it's not one-on-one, it's going to be a hard race. And we'll get used to a communist, and he's going to have to go through the White House and get approvals for everything. And we're going to make sure that New York is not hurt. We want to make sure that New York is cherished and taken care of. And so I didn't know he was running or not running. But you didn't offer him an ambassador? No, I didn't do that. No, I wouldn't do that. It's nothing wrong with doing it, but I didn't do that. Yeah, for the G20, we understand that it'll be held at Doral. Yes, it's going to be a Doral, yeah. You considered that with the G7 last time you decided against it. Why go forward with it? Well, I think that everybody wants it there because it's right next to the airport. It's the best location. It's beautiful, beautiful everything. They actually requested that it be there because location is the best. And we will not make any money on it. We're doing a deal where it's not going to be money. There's no money in it. I just want it to go well. And it's going to be each country will have its own building. I think it'll be really a beautiful thing. And Doral's been very, very successful. One of the most successful properties in the country. And, frankly, it's the problem is in December, that's the biggest month in Florida. So, using it for you can't get a room in Florida in December, January, et cetera, that area. And that's the time we're talking about. So from that standpoint, it's not good, but we want to make sure it's good. I think Doral would be the best location. And again, they'll have their own buildings. It'll be incredible for them. And being like 10 minutes, less than 10 minutes from the airport, and it's a big airport, international, all of the planes will be able to land, go right into their quarters. So I think it'll work out very well. Earlier on your Fed answer, sir, you said that you're looking at maybe three candidates. Or three candidates. Should we interpret that? Do you like Secretary Vest in his current role? Well, I like him too, but I had him as a fourth. I know I had four. You were talking about four. Now I'm talking about three. He told me I'm not leaving
he wants to be doing, and if he was leaving, I mean, he would certainly be one of the people I'd want. But I asked him specifically. I could ask him right now. Would you rather stay where you are as treasurer, or would you rather go to the? Sir, I'm the only person on the planet who does not want the job. Okay. He really told me. He said, "I love what I'm doing." I wouldn't want to really take him because he is doing a great job. Are the top three still then, Mr. Waller? I am looking at Kevin also, and I'm looking at. Yeah, I would say you could say those are the top three. Good job. It's very good. So you're saying you believe Andrew Cuomo would be the best one-on-one candidate against him? Well, I think if I'm only going by the polls. It's not an endorsement or anything. It just seems that he's second. And what you do to win is you take the guy who's second and you hopefully add one and two. But maybe if the one isn't getting out, then he's not getting out. And that's okay. I think the mayor's a very nice person. I helped him. He was got caught up in a scam by the Biden administration, what they did. So I helped him out a little bit, but I would understand why he doesn't do it. I do think this. I think if you have more than one candidate, we've got ourselves a communist mayor in New York. And I don't like communist mayors. I don't like them. Yeah. You passed one big beautiful bill, sir. 5 months, all these slew of events next week. World Cup, G20, all America 250. Given this, what's your economic outlook for the year 2026? How much growth do you think is reasonable for us to expect economically next year? Well, I heard, and we were on a very downward path with Biden, and I heard that the most we could do is 1% GDP, and now I'm hearing 3.2% and 3.5% and all. And our big year won't be really next year. I think it'll be the year after, because when these plants start opening up, it takes a period of time to build them. We're going to have tremendous job growth. It's unprecedented. We have unprecedented in history. There's never been anything like it, because we're going to have more than $17 trillion invested. There's never been anything like that. If we did $1 trillion in 1 year, and this is 6 months, 7 months, because we really focused on it over the last 6 months. But we're going to be doing. Nobody's ever seen numbers like this. When this stuff starts opening up, our country's being rebuilt. And by the way, Washington, D.C. is being rebuilt. In addition to the fact that we have a safe city now, and our National Guard was fantastic and worked with the mayor, worked with everybody, we're also doing a refurbishing of Washington. We're going to redo some of the roads, the surfaces. We're going to redo the medians. We're going to take the broken tiles off the tunnels and put brand new tiles up. And we're going to regrass all the parks. They're going to be regrassed by people that build world-class golf courses, and not necessarily people that work for me, because I don't care about that. I just want to, I'm very good at grass. Grass has a life, just like you have a life, right? It has a life. Well, this grass has been up longer than, it's like 4 lives, okay? That's why there's a lot of areas where there's just no grass. But we're going to regrass all of the parks. We're going to, in a year from now, you won't even recognize it. Graffiti's gone, the tents are gone, the medians falling into the roads are gone, the potholes will be gone, the marble's going to be polished and beautiful. It's all going to be beautiful. We're working with Clark Construction, who's one of the, well, definitely the biggest here, one of the biggest in the country, and they've been great. And we're going to do about a 10-mile radius from the White House, from the Capitol. Looking sort of at both of them, go right in the middle of both of them and to start drawing circles. And everything is going to be spit-shine. When the head of Poland came here last week, and when other leaders came here, a lot of them have been here over the last 8 months. I said, what do you think? And they said that we're a little surprised at the look, the filth on the road. Now it's much better. We've got it much better, but we have to do some construction things. I mean, you have medians that are all broken and rotted and rusty and disgusting. And they're all going to be changed. You're going to have a very different look. You're going to have the look of prosperity, not the look of poverty. But the big thing right now, initially, is we have no crime in Washington. We literally have no crime. They said it's down 87%. It's not down 87. It's down like 100%. We have almost no crime. People are going to restaurants that wouldn't have even thought about it. And I know families that have gone 4, 5, 6 times to restaurants over the last few weeks. And you people are
in the same category. I mean, yes. I agree on that. Thank you. It's a whole different place, right? That's very nice. And you're so tough usually. I like her now. Right? No, because she was truthful. Is that a correct statement, Brian? Yes, sir, it is. I heard you were actually mugged. You're a big, strong guy. I heard. I can't do anything when he has the guns. No, you can't. You know, you say, thank you very much, right? Can I follow up on the beautification of these? Yeah. Yeah. Just out front of the White House is a blue tent that originally was put there to be an anti-nuclear tent for nuclear arms. It's kind of morphed into more of a anti-American and sometimes anti-Trump at many times. Where is this blue tent? Right in front of the White House on the north lawn, on the other side of the Black Gate in Lafayette. I haven't known this. All of us in here walk right by it every day. It is an eyesore. Oh, I didn't know that. Take it down. Take it down today, right now. Nobody told me that. So you're saying there's a blue tent? It's been there for 30 plus years. It's originally a peace tent, but it's kind of morphed into. Well, yeah, morphed into radical left. Okay. Well, what I've heard. Is it in the ellipse? Where is it? No, it's in the Lafayette Park. Exactly. Lafayette Park. Take it down. Okay. What's interesting about it is that I've had people tell me it's a public health hazard because people sleep in there, they eat, there's rats. Yeah. But also it could be a national security risk because people hide things in there, they can Okay. weapons in there. We're going to look at it right now. We have removed over 50 tent sites, not 50 tents, hundreds and hundreds, maybe 1,000. I think it's over 1,000 tents, but 50 sites. So I'm a little surprised to hear that, but we're going to look into it right now. Lafayette. On the National Guard, Yes. DC mayor has gotten on board with their cleanup of DC, but the DC Attorney General has said that he plans to, that he's suing you for Yeah. your realization of police. What's your Can you imagine, we have an attorney general who's not related at all to the mayor, by the way. You know, it's a totally separate department. We've got so many separate departments. You have the district attorney has nothing to do with the mayor. The whole thing is crazy. But how about this? We just set a record on low crime in Washington, D.C., and we have a man suing us to let us go back to high crime. We're going to have to be here for a little while to make this really work long term after we're gone. And so we're going to meet that head on, and I suspect we'll be very successful. And I can always declare a national emergency because this was a national emergency. But right now we have the safest city. We have now one of the safe cities in the country. We had almost the worst. I mean, a city that was as bad as some of the horror shows that you've heard about for years. And we're going to fix some of those horror shows too. Okay? President, the Google ruling today, you posted on Truth Social about the Europeans fining Google. So Google is a great company. Yeah, Google is a great company, American company. Apple is a great American company, and so many others. And the European Union, I don't know why they do it, but they have been fining them numbers that have been astronomical. More so before I got here. But Apple paid $17 billion a fine in the last year. Apple, $17 billion on a case that a lot of people think they weren't guilty of. And no, I'm going to be speaking to the European Union, but it's not fair. Google just got fined $3.5 billion, and they've already paid $13 billion. They're up to $16.5 billion. And people say there was nothing wrong with what they did. It's almost a source of income to run Europe. It's become a source of income, and many other companies too, mostly tech companies, but we can't let that happen. What are you seeking from the Europeans and by when? No, I can just say you can't do that. I mean, you know, they respect us now. They didn't respect us a year ago. European Union respects us. Look, they're paying us $950 billion, right? They got to respect us. They were very disrespectful of our country. I have great respect for Ursula. I've gotten to know her very well. And I just don't think it's fair that they're taxing and really it's almost become like a tax. It's become so regular. And I've gone to lawyers and I've asked them, what do you think? They said, they didn't do anything wrong. We can't do that. It's not fair. And it's interesting. I don't hear that about China, and I don't hear that about other places. I hear it about the European Union. We were talking about it last night. I think we had a gathering. That was the highest IQ group of people I think any room has ever had last night, you know? It was about as high as you can have. All the tech geniuses were there. They love their computers. They would tell me more about chips that I want to know. Did this come up last night?
Yeah, it did come up. A couple of countries said, companies said that they were taxed by the European Union. It's interesting. They weren't complaining about, in that regard, China. They weren't complaining about other places. It's the European Union, and they have. Apple was again forced to pay $17 billion last year. So I think we're going to change that around. It's just not fair. We don't want that to happen to our companies. And if somebody does that, we should be doing it to them. They've got to pay, let them pay us. But you just can't do that to our companies. Yes. Was Elon Musk invited to the dinner last night? I wanted to go back to the G20 real quick in Miami. You know South Florida very well. Many cities are being considered for the G20. Was this a hard decision, or did Miami just stand out to you? It wasn't a hard, really. I mean, look, it's got the weather. We're in December, so it's, cold in some places, and that's beautiful too. Cold weather's nice. It's all nice, depending on the city. But no, Miami really wanted it. The mayor really wanted it. The people down there really wanted it. You might just address that for a second, Mr. Mayor. Yeah, as I said, I mean, a conference of this kind does two things. Number one is it puts us on the global map with the great global cities. And I think that's something that we've been trying to achieve for a generation. And I think number two, it's a tremendous boom for your economy. I mean, as the president knows, he has, multiple hospitality assets. And the working people of Miami, the small business owners are going to benefit tremendously from the economic impact of a conference like this in our city. So it's an image thing, but it's also benefiting working people in our community. Do you think Xi and Putin will attend the G20? That's an interesting question. I'd love them to if they want to. I mean, they can, as observers. They'd be observers. So I'm not sure they want to be an observer. But if they want to, we can certainly talk. Can I ask you another Florida question? The vaccine mandates that were rolled back for school children. What do you think about that? Well, I think we have to be very careful. Look, you have some vaccines that are so amazing. The polio vaccine, I happen to think, is amazing. A lot of people think that COVID is amazing. There are many people that believe strongly in that. But you have some vaccines that are so incredible. And I think you have to be very careful when you say that some people don't have to be vaccinated. It's a very tough position. So I'd give you an answer. I'll give you a feeling. But just initially, I heard about it yesterday, and it's a tough stance. Look, you have vaccines that work. They just pure and simple work. They're not controversial at all. And I think those vaccines should be used. Otherwise, some people are going to catch it and they endanger other people. And when you don't have controversy at all, I think people should take it. Okay. One more follow-up on your comments on the taxes. On the upcoming tax bill, are you discussing, do you want that new tax bill to eliminate inflation from calculating capital? When you say the upcoming tax bill, because when you have an upcoming, we just passed the biggest tax cut in the history of our country. So there's nothing upcoming. There's something that we just passed. So we passed the biggest tax cut in the history of our country for the middle class, for the worker. And that's the only bill that we're really talking about. We did a good job. It's very comprehensive. And I will say the Democrats, if you gave them every point that they wanted, every point that they've dreamt of all their lives, you wouldn't get one Democrat vote. They really are. They've become deranged, sick. It's crazy. If you gave them a list of the top 10 things that the Democrats wanted and you put them in a bill to get passed, you wouldn't get one vote. It's the only thing they have. They stick together, but they're dying. I mean, they're down to 16% approval rating, the lowest rating in history for either party. And we have the highest rating we've ever had. The Republicans have the highest rating we've ever had. On the National Guard, have you decided which city that you want to go into next? Yeah, I have. I have. I'm not going to say it now, but yeah, I have. We're going to go into another place and straighten it out. And I will say this: I watched today. I didn't know that was continuing to go on, but Portland is unbelievable. What's going on in Portland? The destruction of the city. Well, I'm going to look at it now because I didn't know that was still going on. This has been going on for years. So we'll
we'll be able to stop that very easily. We'll be able to stop. But, you know, that was not on my list, Portland. But when I watched television last night, this has been going on. You wouldn't be standing if you were the mayor. You would be. Can you imagine what they're doing? They're walking in throwing smoke bombs into store. These are paid terrorists, okay? These are paid agitators. These are professional. I watched that last night. I'm very good at this stuff. These are paid agitators. They get paid money by radical left groups, not radical right groups, radical left groups. And they get paid a lot of money. And you see it with the signs. You know, they all have perfect signs that are printed. They look as good as that sign. Those signs aren't made in basements. They're made at professional printing offices, and they cost a lot of money. These are paid agitators, and they're very dangerous for our country. And when we go there, if we go to Portland, we're going to wipe them out. They're going to be gone, and they're going to be gone fast. They won't even stand the fight. They will not stay there. They're ruined. They've ruined that city. I have people that used to live in Portland. They've left. Most of them have left. But what they've done to that place is it's like living in hell. Yeah, go ahead. Thank you for your statement before. AP is reporting that you would be banning visas to delegations who will be attending the UN General Assembly, including Brazil. Your reaction on that, sir? And that who's banning them? Trump. Well, we are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, you know, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil. But the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. How are trade talks going with India and with other countries that you haven't reached a trade deal with? They're going great. Other countries are doing great. We're doing great with all of them. We're upset with the European Union because of what's happening with not just Google, but with all of our big companies. They just, you know, hit them with these unbelievable fines, you know, $17 billion and $14 billion. And they use that money to run Europe. It's almost become like common. It's almost become a yearly occurrence, like it's a tax. And so it's very unfair. I want to thank you all very much, and we'll see you around. We're going to see you in Florida, but we'll see you a little bit before that, I suspect. What are Okay. you having for dinner? Thanks, guys. Thank you, guys. Well, I'll be having something good here. I'll be at the White House. Thank you. Thank you very Thank you, much. guys. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, guys.